there is this anomaly, but that can be sort of understood from the intent of the legislation and allowed it to remain. Remain meaning they didn't say retain it, but they sort of kept it and said go ahead with the act, because where it should be overlooked, you can. I'm only paraphrasing the words of the court. Subsequently, in Tripura High Court, sir, the same matter came and the court felt, whilst the Mumbai High Court Goa bench understood it, but they didn't agree and said that correction will have to be effected immediately, keeping in line with the intent of the court. It is that correction of that anomaly which Mumbai High Court's bench Goa saw and kept the spirit of the act intact. Similarly here, Tripura noticed it, High Court, but wanted an immediate correction. And because they wanted an immediate correction, the ordinance had to be brought in only to the limited extent of correcting the anomaly. And it is that and nothing more than the ordinance. There is not one more criminality or anything else being brought in the bill which is now coming. It is exactly the same as the ordinance which is getting replaced here. So with this said, I would think Honourable, learned member Bhartrhari ji will agree, and hope he doesn't find a reason to have to get up and voice opposition to it. Repeatedly, I have been opposing lawmaking position of the government. And last time, on a different ordinance, I had specifically mentioned that how many ordinances per year has been moved by the present government. During the UPA regime, also I had also mentioned how many ordinances have been moved by the UPA regime. And before that, the first NDA government also had moved number of ordinances, and per year the average was actually been increasing year after year. This provision of ordinance is a very unique feature in our constitution, and especially in subcontinent, in our subcontinent, this is a unique feature which we have inherited from the British Parliament. But Britain does not have this provision of ordinance anymore. It is high time that we also should do away with the ordinance mechanism. The problem here is, yes, we sit in 4 sessions, budget session in 2 parts, and we have winter session and also monsoon session. But whereas the British Parliament sits invariably throughout the year. There are large number of parliaments in the world which sits throughout the year. But here, because we have sessions in between and intersession in between, law-making provisions has to be done through ordinance. That is the logic which repeatedly number of governments have said. But I still hold the view that making law through ordinance and then subsequently when the session is called, ordinances are withdrawn and the bill is placed for consideration. There are instances, I would not go into that aspect, that how ordinance also has to be withdrawn or has become nullified because the House did not agree. But here I would like to mention this bill, specifically the bill that is now under consideration, suffers from incongruities and is also illegal. And as the Honourable Minister just now mentioned about the Bombay High Court Goa bench, and also subsequently about the Tripura bench, the House would be enlightened when we become aware. When was the Tripura High Court had pronounced that judgment? And what is the duration when the ordinance came into being? That will clear a lot of confusion that is there in this country. I would come directly to the provision, the fundamental rights that I had mentioned the other day relating to 21. What does it say? No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. I am talking about 21. 20 subsection 1, where
protection in respect of convictions for offences. And here, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. In this respect, I would say there is wide acceptance that amendments to taxation law may apply retrospectively, where the government has announced by press release, and we have seen during UPA regime, an amendment was done to impose tax retrospectively. And during that time, the present political party, which was in opposition, both in Rajya Sabha and also in Lok Sabha, had said vehemently that we oppose this. And subsequently in 2014, when the party came to power, they also effected this change. But here, I would just like to mention, yes, it is clearly, but retrospective effect is not allowed in criminal law. The protection given in the Constitution has been the main source of all other judgment with respect of penal provision in tax cases. The judgment have made it well settled that there cannot be any retrospectivity in respect of penalty and confiscation. In the statement of objects and reasons, it is mentioned the word inadvertently, and subsequently, consequential changes was not carried out in Section 27A of NDPS Act at the time of amendment in Section 2 by the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 2014. But how is it possible? This leads to another question that this House had deliberated in 2011. When the minister, that time, of course, in 2011, in the month of March, the then Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee, had moved that amendment. And subsequently, in 2011, perhaps within, I think, 6 months' time, the Standing Committee of Finance had given a report. I can also, because it is now in public domain, I can share it, that the question was asked that the amendment that you are moving in 2011, this amendment came to light, the necessity of this amendment came to light in 2001 law. Why it took more than 10 years to move the amendment? And the answer that the ministry had given that time, or the department had given that time, was too frivolous. That government changed. I have the standing committee report before me. It's a government changed and number of procedures had to be followed, but it took 10 years to make that amendment. And now what is happening? This is an act which came into force in 2014. And we come to know about it, about this, as it is said, clerical error, come to know about it after the Goa bench of Bombay High Court, attention was drawn. And subsequently, the Tripura High Court said, you have to correct it. I will come to that aspect, what Tripura High Court has actually pronounced. But this shows, if I may say so, the lackadaisical approach of the ministry or the department. Invariably, whoever is there in the government, be it the UPA government or in the NDA government, how they have functioned, especially relating to this important law. What does the law say? Law says anyone who is actually carrying out the basic change that was affected was that anyone who deals with narcotics, who harbors offenders, they should be punished. Those who indulge in financing illicit trafficking, they should be punished. This was the intent. If this is the intent, how a mistake has been committed? And this mistake is to be corrected after 7 years. A mistake which was to be incorporated to 10 years,
from 2001 to 2011. And when it was notified in 2014, it took another 7 years. In 2021, we are making this effort. And I believe, I may be wrong, I hope I am wrong. Again, to have a retrospective effect, which is actually, it leads to double jeopardy, which leads to, which is illegal. I would say, again, you are taking this after, if at all, with your majority and getting passed in Rajya Sabha, if at all it becomes an act, again it will be decided in the court of law. But here I would like to appraise this House. On 3 occasions, of course, retrospective effect has taken place. The essentiality of a right to protection from retrospective criminal law has generally been accepted without argument. Literature on the justification for the principle is very scarce. Yet, it has become well accepted that individuals have such right. The principle has been enunciated in various declarations of human rights from 1789 until the present. Nevertheless, there are some examples. I would refer to only 3. 3 examples of retrospective lawmaking are mentioning. One is Nuremberg trial of the late 1940s. The decision of the House of Lords, Shaw versus Director of Public Prosecutor in 1961. And the Commonwealth's bottom of the harbour tax legislation of 1982. These are the 3 instances which history tells us, yes, retrospectively a penal provision can be affected. But these 3 are totally different from the provision that we are accepting here. And here I would like to mention, in each case, the actions of the defendants were considered so morally repugnant that the principle of non-retroactivity was relaxed so as to allow them to be punished. These examples differ to the extent to which the retrospective aspect of each has been accepted. The Nazis tried at Nuremberg are generally said to have been adjudged fairly. The decision in Shaw's case has been criticized widely, and the bottom of the harbour tax legislation has attracted both critics and champions. Retrospective operation is an inaccurate term and open to various interpretation. I would say the word retrospective is somewhat very ambiguous. Sir, ordinarily, a canon of interpretation of penal legislation does not permit penal provision to have retrospective effect. But Article 20, subsection 1, doesn't bar a civil liability being imposed retrospectively. What is prohibited in Article 21 is only conviction or sentence, but not trial. A person can be convicted and punished under a law in force, which means a law factually in existence at the time of the offence was committed. A law passed on September 30th, but act committed on August 1st cannot be taken to be a law in force on August 1st. And so an act committed on August 1st cannot be punished thereunder. A law not factually in existence at the time enacted subsequently, but by a legislative declaration deemed to have become operative from an earlier date, cannot be considered to be a law factually in force earlier than the date of its enactment. But what I understand from the Honourable Minister's version is, yes, it was in law in a part, but at the penalty clause, it was absent.
a question was posed. It was posed, and this question also is of greater importance. Is financing illicit trafficking of narcotics and harboring offenders no longer a crime in India? And to address that situation, these amendments actually have been made. What does the provision that was omitted in the Act is? The provision reads, whoever indulges in financing, directly or indirectly, any of the activities specified in subclauses 1 to 5 of clause 8A of section 2, or harbors any person engaged in any of the aforementioned activities, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine, which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 2 lakh rupees, provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine extending 2 lakh rupees. Sir, I would the Act, which has evolved over the years and has been amended thrice earlier, and this is the 4th time it is before us. The ordinance, it was mentioned, due to oversight. It is also said there was a drafting error. Now we hear it is a clerical error. Omission is notified after 7 years, is noticed after 7 years, as I mentioned. What was the relevant cause that I have also mentioned? So why the provision became inoperable? That is the question I hope Minister will tell us. The text of the provisions that I have also read. But section 2, subsection 8A, subclause 1 to 5, which is supposed to be the catalogue of offences, does not exist after the 2014 amendment. So if section 27A penalizes a blank list or a non-existent provision, it can be argued that it is virtually inoperable. In 2016, sir, an accused sought bail before a special judge in West Tripura, in Agartala, citing this omission. The district judge referred the case to the Tripura High Court. The law ministry had argued, and this is the beauty of the argument here. The law ministry had argued that the court must overlook the omission and read the legislation as a whole. It also told the court that the provision would be amended to rectify the dissonance. The Tripura High Court agreed with the government's view, but said it may not be the best solution. Now I come to the second aspect, that is recent judgment of Honorable Tripura High Court, which prompted the government to take remedial steps to correct the anomaly. The case number is CR 1 reference 1 2020, court on its own motion versus Union of India. The court has held that until, anyway, the court came to your rescue and said, take appropriate steps for amendment as required in 27A. I have my doubt whether this insertion by the court is appropriate. Therefore, I hold the view that criminal laws cannot be amended retrospectively. Article 20 of the Constitution guarantees protection against double jeopardy. Article 20, subsection 1 says, no person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act, charged as an offence, nor can be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force of the time of the commission of the offence. When this is the case, Mehtabji, please conclude. How can the penal provision be End of the pronounced discussion. retrospectively? Yes, please conclude. As I had said, it will lead to more constitutional questions. My question here is, when we accept it was a mistake, why commit another mistake by making it retrospectively? We are all for the change or the
by adding this provision in 27A. But making it retrospective, you are actually there is a flaw in the law, and you correct the flaw. It is necessary. We are all for it. I am all for it. Yes. But making it retrospective, you are making another mistake, which will also be challenged in the court of law. Thank you. And we'll wait. And I have no idea what effect this will have against the alleged culprits who have been apprehended for a large haul of narcotics drugs from a Gujarat port. I believe appropriate steps are being taken. We need strong law that is implementable, clear and swift. Thank you. Thank you. Honorable Member Sri Subhash Bamre. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ इस महत्वपूर्ण बिल पे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया है। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021, इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। दिस बिल सीक्स टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस which was promulgated on 30th September 2021. The government has put into the effect the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Ordinance 2021. Amending Section 27A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. And this is to correct drafting error. As you know, sir, the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act came into force on 14th November 1985 and is the principal legislation through which the state regulates certain operations such as manufacture, transport, consumption that is related to narcotic drugs and psychotropic substances. The Act has evolved over years, and it has been amended thrice. First in 1988, second in 2001, and third is 2014, which has changed its scope and direction. The Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act was passed in 1988. And brought into ensure full implementation and enforcement of the Act. So what was the need of the ordinance? The ordinance is intended to rectify drafting error. In 2014, the Act was amended and the clause number of the definition of such illicit activity was changed. However, section on penalty for financing these illicit activities was not amended and continued to refer to the earlier clause number of the definition. The ordinance amended the section on penalty to change the reference to the new clause numbers. This amendment will be deemed to have been in effect from 1st May 2014. That is when the 2014 amendment came into effect. Whoever indulges in financing directly or indirectly any of the activities specified in subclauses 1 to 5 of clause 8A of section 2 or harbors any person engaged in any of the aforementioned activities shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which can be extended to 20 years, and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may be expended to 2 lakhs rupees. Sir, however, the subclauses of clause 8A of section 2 of NDPS Act was amended, relettered, and relocated at the clause 8B of section 2 of NDPS Act by NDPS Amendment Act 2014, which came into effect from
1st March 2014. Also, the Section 2 of 8 of the Clause 8 has been related an essential narcotic drug, which means that narcotic drug is notified by the central government for medical and scientific use. But a corresponding amendment was not made in Section 27A. Tripura High Court, in a significant verdict, discovered an oversight in drafting 2014 amendment to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985, and unintentionally rendered the key provision of the Section 27A, which provides for the punishment of those financing illicit trafficking, inoperable. Tripura High Court noticed this anomaly and directed the central government to take appropriate steps for amending Section 27A after an accused sought bail before a special judge in West Tripura in Agartala, citing this omission in drafting. In 2016, an accused sought before a special judge in West Tripura in Agartala, citing this omission in drafting. The accused plea was that since Section 27A penalized a blank list, he could not be charged under this offence. The district judge then referred this case to the Tripura High Court. In High Court, Law Ministry had argued that the court must overlook the omission and read the legislation as a whole. It also told the court that provision would be amended to rectify the dissonance. Tripura High Court agreed with the government, but said that it may not be the best solution. High Court directed to take appropriate steps for amendment as required in Section 27A. Hence, with a view to have correct interpretation and implementation of NDPS Act, it was decided to rectify the anomaly in Section 27A of the Act by substituting Clause 8B of Section 2 in place of Clause 8A of Section 2. A Parliament was not in session and urgent legislation was required to be made in the President promulgated the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Ordinance 2021 on 30 September 2021 for rectifying said anomaly by substituting Section 20A of NDPS Act, the reference of Clause 8B of Section 2 for Clause 8A of Section 2. The amendment does not create any new offense, but contains a legislative declaration that the reference of Clause 8A always means that corresponding renumbered provision in Clause 8B, and the amendment seeks to rectify this anomaly. By making changes in Section 27A of this said Act, in order to carry out legislative intent of the statute, which has always been to read Clause 8B in Section 25A and already stood therein. And this bill seeks to replace the aforesaid ordinance. Sir, Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985, which is commonly referred to as NDPS Act, is an act of the Parliament of India that prohibits a person the production, manufacturing, cultivation, possession, sale, purchasing, transport, storage, and or consumption of any narcotic drug of psychotropic substances. This bill was introduced in Loksabha on 23rd August 1985. It was passed by both the houses and came into force on November 1985. The NDPS Act has been amended thrice, first in 1988
second in 2001, third 2014. The Act extends to the whole of India, and it applies also to all citizens outside India and to all persons on ships and aircrafts registered in India. The Narcotics Central Bureau was set up under this Act with effect from March 1987. Narcotic Control Bureau, that is NCB, हाल ही में NCB came into limelight. सर आपको मालूम होगा पिछले एक साल पहले 6 महीने पहले there were cases of drug abuse in Bollywood. I would not name the people, but that has reflected how deeply this drug menace has entered into the society. We have seen बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम आए. अभी अभी कुछ महीने पहले एक हिंदी सुपरस्टार का लड़का क्रूज में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और उसके इन्वेस्टिगेशन में भी वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम अंदर आए. देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है द ड्रग मेनेस से वेदर उसके बाद ड्रग मिला नहीं, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम लिए गए. से आई एम ऑन्को सर्जन, मैं जानता हूं cannot be said to be in court. Yeah, honorable member. See, my intention is No, simple. you are aware of that this matter is sub judice. Matter is under consideration by Okay, court. sir. Kindly avoid it. My intention is simple. With a stringent law enforcing agencies काम कर रही है, फिर भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं. The bill was introduced in Loksabha, that I already said. Narcotic Control Board was set up under this Act with effect from March 18, 1986. This Act is designed to fulfill India's treaty obligation under the Single Convention of Narcotic Drugs and Convention Psychotropic Substances and United Nations Convention against the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. This act was brought into Parliament to consolidate and amend the law relating to the narcotic drugs to make stringent provision for control and regulation of operations relating to the narcotic drugs and psychotropic substances, to provide for the forfeiture of property derived from or used in illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. Sir, India had no legislation regarding narcotics until 1985. Cannabis smoking in India has been known since at least 2000 BC. And it is the first mention in the Atharva Veda, which dates back few hundred years BC. The Indian Hemp Drug Commission, cannabis also known as hemp. The Indian Hemp Drug Commission, an Indo-British study of cannabis uses in India, was appointed in 1893, found that a moderate use of hemp drug was practically attended by no evil results at all and produces no injurious effect on the mind, no moral injury whatsoever. That is in small quantities. But regarding excessive use of the drug, the Commission concluded that it may certainly be accepted as very injurious. Cannabis and its derivatives, marijuana, hashish, charas, and bhang, were legally sold in India until 1985, and their recreational use was commonplace. Consumption of cannabis was not viewed as being similar to consumption of alcohol.
सर मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा, ये एक्ट के पहले हमारे देश में क्या परिस्थिति थी। आई एम ऑन्को सर्जन व्हेन आई वाज मेडिकल स्टूडेंट इन 1974। तब हमारे कैंपस के बाहर ये कैनाबिस के जितने भी वैरायटीज है इजीली अवेलेबल होते थे और गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल प्रे ऑफ दिस ड्रग अब्यूज, एंड दैट्स व्हाई दिस act was necessary, and I congratulate government for them same. Consumption of cannabis was not seen as a socially deviant behavior and was viewed as being similar to the consumption of alcohol. Ganja and charas was considered by upper class Indians as a poor man's intoxicant, although the rich consumed bhang during Holi. United States began to campaign for worldwide law against the drug. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में पूरी युवा पीढ़ी एक ड्रग मेनेस के गिरफ्त में आ रही थी, एंड दैट्स व्हाई द यूनाइटेड स्टेट्स began to campaign for a worldwide law against the drug following the single convention on narcotic drugs in 1961. However, India opposed the bill move and withstood American pressure to make cannabis illegal for nearly 25 years. American pressure increased in 1980, and in 1985, then government succumbed and enacted NDPS Act banning all narcotic drugs in India. India has long history of opium and cannabis use, especially for medicinal use. Sir, narcotic drugs or psychotropic substances. I'm an oncosurgeon, that's why I can tell you that cancer patients, there are many varieties of cancers and very few cancers are cured. Remaining cancers, we prolong the disease-free life. लेकिन जब रिकरेंस होता है और स्टेज 4 के कैंसर रहते हैं तो उनको जो पेन होता है, इट इज एक्सक्रूसिएटिंग पेन, 1 मिनट के लिए नहीं सो पाता, तो ऐसे पेशेंट के लिए मॉर्फिन बहुत ज़रूरी होता है. मॉर्फिन के वजह से कम 6-7 सो सकता है, 6-7 आवर्स, एंड दैट्स व्हाई these drugs are equally important for the medicinal use. Law enforcing agencies are of the view that number of chemicals in the scheduled list should be increased as traffickers find it to circumvent the existing rules by importing and exporting chemicals outside the list and then use it to manufacture psychotropic substances. According to Department of Revenue, possession up to 1 kilogram terms small quantity of cannabis, and for the commercial quantity involving a seizure up to 20 kilogram or more. For charas and hashish, small quantity is up to 100 gram, while the commercial quantity is 1 gram and more. Separate small and commercial thresholds have been prescribed for various drugs banned under NDPS Act. The government के लिस्ट में 122 मैन्युफैक्चर ड्रग्स है सर, एंड बाकी के नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज ऑलमोस्ट 75 है. द एक्ट टेक्स सीरियस व्यू टू रिपीट फॉर द रिपीट ऑफेंडर्स, prescribing rigorous imprisonment of Honorable member, please conclude. Up to 1.5 times of the maximum term of imprisonment for that offences, and also fine which shall extend to 1.5 times of maximum amount of fine. Repeat offenders are liable to even face a death penalty if they are not convicted again of a similar offence, depending on the quantity of the drug seized. Okay. According to 2019 report prepared for Ministry of Social Justice and Empowerment by the National Drug Dependence Treatment Center, NDDTC, of AIMS, cannabis and opiates are the most commonly used substances in India. Thank you. After alcohol. 1 minute, sir.
The report of the magnitude of substance used in India says that survey had found more than 3 crore individuals had used cannabis product in prior years, while 2.6 crore people said that they use the opioid, which includes opium and its variant, heroin, smack, and brown sugar, and availability of pharmaceutical opioids. It added that estimated 85 lakh people inject the drugs. The report notes that while several government agencies are mandated to enforce strict drug control laws and regulation, लेकिन वास्तव ये है सर कि आज भी हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स के गिरफ्त में आ गई है. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Manish Tiwari. Thank you, Mr. Yes. Chairperson, sir. Mr. Chairperson, sir, this bill represents a pure question of law. ये कानून का बहुत ही खालिस सवाल है. And what is the question of law? That is found in para 5 of the Statement of Objects and Reasons of this bill. Para 5 states, this amendment does not create any new offence, but contains a legislative declaration that reference of clause 7(8)(a) always meant the corresponding renumbered provision in clause 8b, and the amendment seeks to rectify this anomaly by making changes in section 27A of the said act in order to carry out the legislative intent of the statute, which has always been to read clause 8b in section 27A and already stood therein. Now, Mr. Chairperson, sir, the question is, can a substantive sentencing provision in criminal law be given retrospective effect by a legislative declaration? That's the substantive question of law, which unfortunately this bill does not address. My learned friend, Mr. Mehtab, read out Article 20, subclause 1 of the Constitution of India. And may I, with your permission, Mr. Chairperson, sir, read out that provision in my own manner. Article 20, subclause 1, states that no person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. And it goes on to say that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. Now, why was this safeguard inserted by the framers of the Constitution into this document way back in 1950? Because it primarily encapsulates two of the founding principles or the ground norms of law. The first ground norm is that every person is presumed innocent until substantively proven guilty. This is the first principle of the law. The second principle of the law is, and this goes back almost to 2500 BC, and has held the field in the evolution of classical legal theory now for over 2500 years, that no person can be punished except in accordance with a sentencing provision which is in force when the offence is committed. If this bill, Mr. Chairperson, sir, is accepted in the form
in which the government has proposed it, this means that Article 20 of the Constitution of India will become redundant. And we are going to open the floodgates of misuse. Look at the implications of what we are saying. What we are saying is that suppose if there is an offense which is committed today, or for that matter, let me extend the argument differently. If I am carrying out a lawful activity today, 5 years down the line, you can amend the law with retrospective effect, make that lawful activity illegal, and send me to prison. Is this the kind of legislation which this House intends to pass? Because this then sets a very dangerous precedent. And it absolutely takes away the principle of stability which is intrinsic to criminal law. That if at any point in time in the future, any law can be brought and it can be given effect retrospectively, then no person in this country will ever be safe. And it has implications on the confidence which people have in our supreme legislative institutions. Even though the legislative intent of the NDPS Amendment Act 2014 was very clear, but still, with great responsibility, I would like to state that the bill which has been brought now, it cannot validate a wrong which got committed in 2014. The fact is that between 2014 and 2021, unfortunately, if someone has to be sentenced in accordance with Section 27A of the NDPS Act, the fact is that he cannot be sentenced. And this is the consistent principle which has been upheld by the courts of law. Mr. Chairperson, sir, with your permission, let me refer to a judgment of the Supreme Court with regard to the NDPS Act itself. In the year 2001, 2001 में इसी संसद ने जो एनडीपीएस का कानून था उसमें संशोधन किया और संशोधन करके उन्होंने फर्क किया कि जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको 60 ग्राम से नीचे की मात्रा में रखा और जो कमर्शियल क्वांटिटी है उसको 250 ग्राम से ज्यादा किया। अब एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जवाहर सिंह। अब जवाहर सिंह के पास 65 ग्राम स्मैक पकड़ी गई और कानून के हिसाब से उसको सजा दे दी गई। तो उसके वकील ने उच्चतम न्यायालय में जाके गुहार लगाई कि साहब ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, ये संशोधित किया गया है और इसका मेरे मुवक्किल को लाभ मिलना चाहिए। माय क्लाइंट should avail of the benefits of this legislation. A division bench of Justice S.B. Sinha, one of the more erudite judges in the Supreme Court, and Dr. Mukundan Sharma, what did they hold in that case? And let me read it out. And Mr. Minister, possibly this will make you reflect on the legislation which you have brought before this House. The judges said, it is now beyond any doubt or dispute that the quantum of punishment to be inflicted on an accused upon recording a judgment of conviction would be as per the law
which was prevailing at that relevant time. As on the date of the commission of the offense and or the date of conviction, there was no distinction between small quantity and commercial quantity, question of infliction of a lesser sentence by reason of the provisions of the amending act, in our considered opinion, would not arise. The court further says, it is also a well-settled principle of law that a substantive provision, unless specifically provided for or otherwise intended by the Parliament, should be held to have a prospective operation. One of the facets of the rule of law is also that all statutes should be presumed to have a prospective operation only. And the court went ahead and dismissed that appeal, saying that even a beneficial legislation, मतलब जो कानून इस संसद ने लोगों को राहत देने के लिए पारित किया था, उसका भी फायदा नहीं दिया जा सकता, उसको पिछली तारीख से लागू करके, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करके। ये उच्चतम न्यायालय ने एनडीपीएस के केस में 2001 का जो ऑर्डिनेंस था, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अपना फैसला सुनाया है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आती कि अगर उच्चतम न्यायालय का यह रुख है, तो ये जो संशोधन आप लेके आए हैं, this amendment that you have brought, which talks about imprisonment from 10 years to life, is a substantive sentencing provision. How will any court allow it to have retrospective effect? If you read 27A, and let me read it out for the purposes of this House, it's a substantive sentencing provision. Whosoever indulges in financing directly or indirectly any of the activities specified in subclauses 1 to 5 of clause 8A of section 2, or harbors any person engaged in any of the aforementioned activities, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, which may extend to 20 years, and shall also be liable to a fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 2 lakh rupees. Substantive sentencing provision है, आप 10 साल से लेके उम्र कैद तक की बात कर रहे हैं। कौन सी अदालत आपको इजाजत दे देगी कि एक लेजिस्लेटिव डिक्लेरेशन से कि 2014 में हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये था, कौन सी अदालत आपको इसको लागू करने की अनुमति देगी? मैं समझ सकता हूं कि वित्त मंत्रालय में एक धारणा है, मैं भी बड़ी साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूं, that there is no equity to tax and tax legislations can be provided for retrospectively. However, even where insofar as taxing statutes are concerned, उसमें भी अदालत ने बहुत साफ कहा है कि आप पिछली तारीख से कर तो वसूल सकते हैं, you can collect taxes, with retrospective effect, but penal provisions, compensatory provisions, they cannot be applied retrospectively. और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि ये एक जजमेंट है, जेके स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का फैसला है. It says that the judgment has made it well settled that there cannot be any retrospectivity in respect of penalty and confiscation. What does the exact judgment क्या कहती है? It will be against all principles of jurisprudence
to impose penalty on a person or to confiscate his goods for an act or omission which was lawful at a time when such act was performed or omission made but subsequently made unlawful by virtue of a provision of the law. And there are several judgments to the same effect. Following this leading judgment, Chief Commissioner of Excise Ahmedabad versus Orient Fabrics, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एक्ट की जो पेनल प्रोविजंस हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं की जा सकती. चीफ कमिश्नर ऑफ मुंबई वर्सेस लाल माइनिंग इंजीनियरिंग वर्क्स 2007 का फैसला है, और काफी फैसले हैं जिसमें इवन टैक्सेशन स्टैट्यूट में ये बात बिल्कुल साफ की गई है कि उसमें भी जो पेनल प्रोविजंस हैं, कॉम्पेंसेटरी प्रोविजंस हैं, उनको आप रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते. तो मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि आपका कानून किसी अदालत में टिकेगा. ये बेहतर रहेगा कि आप इस कानून को संशोधित कीजिए और इसमें यह कहिए कि जो आप अमेंडमेंट लेके आए हैं वो उस तारीख से लागू होगी. इट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस law gets notified. Since Mr. Chairperson has rung the bell, I just have one or two more submissions to make. On a slightly broader point, Mr. Chairperson, sir, हम अफगानिस्तान में जब से तालिबान का राज बना है, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है. वहां पे जो नशीले पदार्थों की उपज है और उसकी जो तस्करी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और उसका एक बहुत दूरगामी परिणाम भारत पे पड़ने वाला है. ये जो मुंद्रा पोर्ट में इतना बड़ा नशीले पदार्थों का जखीरा पकड़ा गया, ये उसकी जीती जागती मिसाल है कि अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसका सीधा सीधा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है. उसके अलावा जो इस मुल्क में सिंथेटिक ड्रग्स की समस्या है, which is what is really afflicting our youth, synthetic drugs being manufactured in legitimate pharmaceutical factories, that is something which the government has been completely unable to come to grips with. मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि कानून संशोधित करने की जगह आप जो अपनी इन्फोर्समेंट है उसको चुस्त दुरुस्त करिए और इन्फोर्समेंट को चुस्त दुरुस्त करके ये जो नशीले पदार्थ भारत में आ रहे हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से ड्रोन्स के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. Honorable Member Shri K. Veeraswamy ji. So thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance 2021, sir. Sir, I would like to quote Thiruvalluvar, a couplet from Thirukural from him, sir, a poet who has written about everything under the sun. And he has said 2000 years ago, Eendral Mugatheyum Innadat Yenmatru Chandror Mugathu Kali. This translates to a mother normally absolves her or protects her children from any kind of crimes which they are accused of, sir. But when even she will not support addict behavior, a drunken behavior, what can you expect of learned people? So the importance of staying without addiction is being exemplified even 2000 years ago. And so many people have spoken about this bill, where this bill was brought in 1985 and subsequently amended several times. And in 2014, the act was amended and the clause number, there was a change in the clause number where the punishment was not commensurate with the clause number, and that has been rectified in this amendment.
Sir, as every other speaker before me, Mr. Mahatab and Mr. Manish Tiwari had said, any act when you bring, if you are going to say that it is going to have retrospective effect, instead of saying from 2014, if you say that it is having retrospective effect from 100 years, I don't know how many people will fall under this law where they will be found culpable, sir. Similarly, just like how it was earlier mentioned, that this will open floodgates for in the future where any kind of an amendment can be made with retrospective effect, I think this should be avoided. Sir, we are also talking about an act where you have to understand what narcotic substances are and what psychotropic substances are. Narcotic drugs are substances that cause stupor, muscular relaxation and reduction or elimination of sensitivity. This is basically something where it removes pain. Whereas psychotropic substances are chemical substances that act on the mind, that is on the conscious or unconscious mental life of an individual. This is something where the main crux of the issue lies, where the youngsters nowadays are getting carried away with these things, sir. Sir, under this act, we have 238 drugs. Going through this list of 238 drugs, I don't know, I would really like to ask the government, how many of these substances have the number of cases been filed, how many of these drugs have been found with, in possession or in abuse? Because out of these 238 drugs, the commonly talked about drugs are only about ganja, tetrahydrocannabinol, cocaine, and I mean, like some other chemical compositions which are very few, sir. So I would request the government to see if these 238 drugs, whether these are actually being abused and whether this list can be shortened. Because I don't even know if the enforcement agencies will have knowledge about all these drugs in question. And also, talking about this amendment which is being brought, it is sad to note that the CJA of the Supreme Court, the Chief Justice, he has observed that passing bills without adequate debate has caused a lot of confusions in the judiciary, sir. Sir, when we are talking about bills without adequate debate, what can we speak about ordinances? I mean, like when this government, this is a bill which could have been brought in during this winter session, and this could have waited 2 months, sir. This was brought in on September 30th, 2021, and this could have waited for 2 months. But what was the need to bring out an ordinance? Was it for a particular case? Our learned member from Dhule, Maharashtra, he had spoken so highly about, I mean, like, accused saying that Bollywood, it is so rampant in Bollywood. If he believes that this drug abuse is there only in Bollywood, I will say that he is in a paradise, sir. I mean, like, I don't know what paradise he is in. Because today, drug abuse, especially ganja and tetrahydrocannabinol, cannabis, has pervaded into schools, sir. Forget about colleges and other walks of life. Today, school children have access to these kind of contraband, and it is the duty of the government to ensure that the sale of these drugs, these things should be contained. When they are talking so proudly or they take such glee in talking about Bollywood, they do not raise a single question. Neither the treasury benches nor the media, they do not raise a single question about the huge haul of drugs which were caught in one of the ports, sir. Why is it that everybody is silent about that? What is the status of the drugs which, amounting to several thousands of kgs, was caught, and there is no mention or talk about that? So I feel that it is a sad state of affairs that we are talking about addiction, and we are also talking, let's not assume that the government has brought in this bill for the welfare of the citizens of this country. Because the honorable member who is not here now, he is a doctor, and I will say that cigarette and alcohol, these are the two biggest threats and biggest problems in this country, sir. The earlier member was talking about cannabis being sold in the roads. Today, cigarettes are being sold in the roads. And though you have an advisory which says that this can cause cancer and this should not be sold to school children, how much of this is being enforced? You find shops outside schools, colleges, everywhere, and the sale of cigarettes is rampant everywhere, sir. And being a doctor, I can say that smoking does not have absolutely any medicinal benefit at all, sir, arguably. Because there is only one topic where they talk about preeclampsia, where they say that smoking probably reduces BP in ladies who are suffering from preeclampsia. But for that,
smoking is one of the biggest health hazards which causes a lot of respiratory problems, cancers throughout the bodies, and not only in the lungs. It causes cancers in several parts of the body like the pancreas, urinary bladder, and other substances. But we do not talk about smoking. We do not talk about alcohol. Sir, one of the biggest psychotropic substance which causes most of the social evils, be it familial, personal, health-wise, to everybody in the family concerned. I have seen families in my state, the alcohol, there is a lot of problems where families are left because these men die at a young age, leaving their family destitute, sir. So when we have these kind of issues, why are we talking so much about these drugs, and we are not even taking adequate action against the people who are selling them or trafficking in them? We are only targeting the people who are found in possession, and that too of small quantities. And we have a law which says that people who are having small quantities of these drugs should be imprisoned for 6 months. So I find that very strange, because there are several countries where some of these drugs, especially cannabis, has been legalized. I am not saying this government should legalize cannabis, but to say a person who is in possession of a small quantity of a drug will be penalized, where he will be sentenced for 6 months of jail, I think is unacceptable, sir. I feel that we should give them adequate provision, and we should even probably the government should take steps to ensure that rehabilitation is provided for these people, either if they can afford it on their own, or if not, if the government can sponsor rehabilitation. That is a way forward. Instead of trying to see how a person can be victimized and who can be taken to task, where the government legally permits the sale of alcohol throughout the country. So in this kind of a situation, I would request that the government take adequate steps to ensure that ordinances of this nature are not promulgated, and give opportunity for the subject to be discussed and debated in Parliament. And though you have a brute majority, I have seen number of times where the opposition members of Parliament on trivial issues, when they ask for an amendment, I feel that there is no great support from the Treasury benches. I request that the Treasury benches can consider some of these amendments which are being said in the right spirit to be taken up in the same spirit, and to help Parliament function better, sir. Thank you very much. Honorable Member Shri Kalyan Banerjee. Sir, thank you, sir, for giving the chance to speak on this bill, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021. Sir, in a catena of judgments, the Supreme Court has said in civil cases or criminal cases excepting taxing statute, no provision can be given a retrospective effect. This is settled principles of law. Despite that, it has been brought. Future days will decide whether these types of provisions are ultra vires or not. Since they are having the majority, they will get it passed through. But it is not final here. Final arbitrator of the interpretation of a statute or the Constitution is the Supreme Court. That will be tested. Sir, I am coming to different parts of this act since this act has come. When a person is arrested with contraband involving commercial quantity according to the provision of Section 37 of the NDPS Act, no court shall grant bail unless satisfied that there is reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence. If this is the provision, coming to such a finding for a court of law before recording evidence is next to impossible. Next to impossible. Sir, offence relating to narcotic and drugs all over the world considered to be more serious. It need not debate that by introducing drug addictions amongst young generation, the future of a nation can be silently killed without nuclear weapons. But the issue involved is nonetheless less important.
Many a times persons are booked and arrested, although either from search of their person or their place of residence, no drug or psychotropic substance is seized. Those persons are arrested merely on the alleged statement of the principal accused from whose direct possession such drugs are seized. It would not be out of place to mention that law permits the police to record statements of the arrested accused while in police custody, but does not permit to use an evidence during trial. Sir, Section 37 of the Act is per se, it is a draconian. In view of the additional limitation it implies over and above the limitation of bail as envisaged in the Code of Criminal Procedure of 1973. The biggest fetter it mandates while dealing with an application for bail is indicated in Section 37, 1B, Roman 2 of the NDPS Act. Inter alia, so far as commercial offences involving commercial quantity is concerned. Legislation mandates the said provision that where a public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence on bail. This is impossible at the threshold without recording evidence. Such position of legislation clearly casts a doubt on its operation, inasmuch as it practically wants cognizance of offences taken by the court of the first instance, wherein an accused have been indicated to have committed an offence in the police report than in such circumstances. It would be virtually impossible for the state court to grant bail to the accused persons. Sir, such a rigor of this parameteria provisions were engrafted in the PMLA Act, and the Honorable Supreme Court of India in Nikesh Tarachand Shah versus Union of India in 2017 held on a similar situation, similar provision, held it is ultra-virus and it really contravening Article 14 and Article 21 of the Constitution of India. This is, sir, I just quote that 2018 11 Supreme Court cases, page 1 at paragraph 43 and 46. Similar type of provisions have been declared ultra-virus. The concept of presumption of culpable mental state as envisaged in section 35 of the NDPS Act is also draconian, as the statutory presumption requires the court to presume the mental of knowledge, intention or reason to believe. Under this section, the presumption is a rebuttable one. The burden of proof is on accused to prove that he did not have the requisite culpable mental state. This same is an anathema to the basic concept of the criminal jurisprudence and practice in the country. Sir, that there are 35 read with section 37 makes it extremely difficult for a person to be released on bail. Thereby, right to life under Article 21 of the Constitution of India is taken away. If anyone gives a statement that I have brought from him, accused is giving a statement, then whose name is there, he will be arrested. And he will not get the bail. Not getting a bail itself is a violating of Article 21. What is the law? Law is that bail is normal, jail is exception. Including the last one is the Arnab Goswami and Chidambaram case. The Supreme Court have said that things. Very recently it has been said. Repeatedly it was the first Justice Krishna Iyer said in 1977 and 78. This is the line of Justice Krishna Iyer. Therefore, sir, report of arrest and seizure as envisaged in section 57 of NDPS Act mandates that a full report of particulars of the same has to be made over to the immediate superior officer
The said compliance has to be understood and read with Section 51 of the NDPS Act and should be placed together with the same. Sir, we have seen that, sir, law in our country enough. So many laws are there, there is no difficulty. The question of the applicability of the Act by the persons concerned. I am not blaming any government. I am blaming the officers who are implementing and introducing it. We know that in so many cases, when no case has been made out to arrest someone, some ganjas are kept in the car or some ganjas are kept in the pockets and he is arrested. Or case is made out, although no seizure has been made. This is the case made out. Where from the ganja is coming, where from these things are coming, nothing is there. Therefore, sir, while addressing this bill, I am requesting the Honourable Minister to revisit the provisions which I have said that already, which I have said 37(1)(b) and etc. That these provisions can be amended or not, especially in view of the recent judgments of parametria clause of the Nikesh Tarachand Sah's case, the judgment delivered by Justice Noriman. Sir, we hope this act should not be misused, not abused by the machineries. That is the problem of this act, nothing. There is no reason to oppose the object of the act. No reason to oppose the object of the act. This act is no doubt necessary, with certain modifications. And what is the caution has been taken under the act itself to control over these officers who have been empowered with the prosecution, investigation, and etc. Thanks, sir, for giving me the chance to speak. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Banerjee. Now, Mr. Gurumurthy. Thank you, Honorable Chairman, sir. At the very out, I thank you very much for allowing me to make my maiden speech in this august house. I am very much fortunate to get this opportunity with the blessings of voters of my Tirupati parliamentary constituency and our Honorable Chief Minister Sri Y. Jagannath Reddy Garu in particular. Sir, according to a 2019 study report by the Ministry of Social Justice and Empowerment, cannabis consumption was steadily growing across the country. Nearly 31 million people reported to have consumed a cannabis product in a year, of which 13 million consumed weed and hashes. Sir, about 22.6 million people reported to have consumed opioids, which include opium, heroin, and a variety of pharmaceutical opioids. Alcohol is the common psychoactive substance used by Indians. 160 million people consume alcohol in the country. Over 9.5 million people are current users of inhalant products in India. There are 2.5 million people consume cocaine. 1.26 million individuals are consuming hallucinogens. There are nearly 1 million people consuming injecting drugs in India. Sir, over 2,300 people died due to drug overdose from 2017 to 2019 in India, with the highest number of such fatalities recorded in the age group of 30 to 45 years. According to the data published by the National Crime Records Bureau, the total of 745 deaths occurred due to drug overdose in 2017, 875 deaths in 2018, and 704 deaths in 2019 respectively. Sir, I would like to further add on the enforcement front that we should give more teeth to the Narcotics Control Bureau and push it for concerted and coordinated efforts with customs authorities, state police, intelligence wings, and specialized units like SCB of AP Police to achieve best results. Sir, I would like to bring to the kind notice of this House
that the initiatives taken by the government of Andhra Pradesh under the dynamic leadership of Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu are highly laudable, sir. The government of Andhra Pradesh has set up a special joint task force by collaborating with the Special Enforcement Bureau and AP State Police to curb the flow of drugs and other sedatives into the state. Having said that, the Special Enforcement Bureau of the Probation and Excise Department was established by the government to curb liquor, ganja and drug activities in Andhra Pradesh. The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, has directed the Police Department and Special Enforcement Bureau to keep a watch on the areas vulnerable to drug abuse and find out the source of the supply of the drugs. The Chief Minister has also launched a massive awareness campaign against drug abuse across the state through Madhya Vimochana Prachara Committee. The MVPC campaigns are specially focused on the section of the society which are at high risk of exposure to drugs. Sir, as we all know that some youth nowadays are attracted mostly to alcohol, tobacco, cannabis, methamphetamine and other stimulants such as cocaine, MDDM pills, ganja and new psychoactive substances like synthetic drugs, opioids, including heroin, etc. Sir. In this regard, I would like to suggest the government that blood tests should be made mandatory in all colleges and high school in every 6 months. Sir. The YSR Congress Party led government has dealt with narcotics smuggling with an iron hand under the leadership of Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, sir. As the peddlers are using innovative means to smuggle the ganja and other narcotic substances, the union government should supplement the efforts of AP Police to succeed in a fight against the ganja menace, sir. The government must promote interstate police coordination to exchange intelligence practices and techniques to curtail cannabis cultivation and capture the perpetrators. Anti-cannabis campaign must be launched across the country along the same lines as anti-tobacco campaigns. Government should take initiative for providing requirement treatment and therapy in the rehabilitation centers by establishing more rehabilitation centers and running de-addiction centers by extending the support to NGOs in the country, sir. Because of the feel-good effect, extended and heavy use of the drugs, especially among the young, government should sensitize parents about spending time with their children in their busy schedule, because as youngs are more vulnerable to mental health problems and depression resulting in the risk of adverse behaviors. Narcotics Control Bureau and state line departments should sensitize elected representatives, celebrities and make them part of strengthening and contributing the fight against drug addiction. However, the union government should also design a comprehensive policy to curtail the narcotic problem in the country, sir. We appreciate the union government for bringing amendment to stringent punishment under the NDPS Act 1985. Before I conclude my speech, I would like to request the union government to educate and create awareness among the youth of the country on the ill effects of addiction to narcotics and psychotropic substances, as it is the youngsters who are the future of this great nation, sir. With these words, I conclude my speech and my party's extend support to this bill, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Gurumurthy. Now, Sri Arvind Sawant. Thank you, Chairman, sir. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021, उस पर मेरे विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय चेयरमैन सर, आप जानते हो कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has recently passed a remark that it was difficult to interpret laws passed by the Parliament. Chief Justice of India N.V. Ramanna recently remarks saying that the legislature has passed laws without conducting studies or assessing their impact. And therefore, this bill, I think you were rightly pointing out that the retrospective effect of it. And therefore, the remarks of the Chief Justice needs to be given a special attention on that. The bill, I think it was earlier also amended thrice. This is the fourth time we are amending it. First, the bill, when it was introduced, it had basically 5 points were there. One is the preliminary definition. The other was regarding authorities and officers.
The third was prohibition, control and regulation. Fourth was offenses and penalties. And fifth was the procedure for investigation and prosecution. Now the fifth is more important, that the procedure and even investigation and prosecution. Now 27A, which we are going to amend, इसका किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं. हाल ही में हमारे मित्र पहचानता नहीं, उनका नाम मैं भूल गया, वो अभी बात करते करते कह रहे थे कि मुंबई के हमारे विधायकों ने, सांसदों ने कल परसों यहाँ जो दूसरा विषय था उस पर से एक संदर्भ दिया था कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जिस ढंग से यहाँ महाराष्ट्र में हमारे ऊपर आलोचना की गई और टारगेट किया गया, तो उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी लोग गांजा चरस बेच रहे हैं. तो मैंने हमें तो इतना ही कहना है कि यह सच है कि इस देश में नहीं पूरे विश्व में, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट कहती है कि पूरे विश्व में इतने लोग एडिक्ट हो रहे हैं इसमें, तो उसका कारण उन्होंने जो बताया है वो बहुत ही गंभीर है. मैं दो वाक्य उसमें से जो है वो बता रहा हूं आपको. अराउंड 269 million people used the drug worldwide in 2018, which is 30% more than in 2009. The reason, what is the reason? The rising unemployment and reduced opportunities caused by the pandemic are also likely to disproportionately affect the poorest, making them more vulnerable to drug use and also to drug trafficking and cultivation in order to earn money, the report says. It further says, the vulnerable and marginalized people, youth, women, and the poor pay the price for the world drug problem. The COVID-19 crisis and economic downturn threaten to compound drug dangers further still, when our health and social systems have been brought to the brink and our societies are struggling to cope. It's a very serious one, sir. And under these circumstances, when during the new government was formed in Maharashtra, some incidents took place. I think yesterday the name was quoted, Sushant Singh died. And then, after his death, the narrative was drawn that as if Maharashtra is entirely engulfed with all these druggists. And the NCB went on acting on that. Abhi usme aur ek Druggist has a different. Right, I can't hear you, sir. Huh? Druggist has a different connotation. Drug dealers or drug takers, you can take. Yes, sir. नहीं, उसमें सर बुरा लगा है, बताता हूँ. और उसमें क्या हुआ, जब आपने अटैक करने की कोशिश की, तो सबसे ज्यादा अटैक हमारे फिल्म इंडस्ट्री पर हुआ. और उसकी राजनीति कितनी गंदी खेली गई पता है आपको? आप भूल गए होंगे सर, इस सदन में बहुत सारे लोग भूल गए होंगे. सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद में बिहार के चुनाव आए, और बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाई, न भूलेंगे न भूलने देंगे, और सुशांत सिंह की छवि उस पर लगाई भारतीय जनता पार्टी. हम किस पे सीरियस है सर? हम किस पे सीरियस है? उसकी मृत्यु पे सीरियस है? हम ड्रग एडिक्शन पे सीरियस है? हम ट्रैफिकिंग पे सीरियस है? किस पे सीरियस है? हम गंभीर किस पर है? और कोई एक अधिकारी बैठ जाता है. इसलिए मैंने पांचवा मुद्दा कहा कि द प्रोसीजर्स एंड द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी यूजिंग द प्रोसीजर्स टू टैकल विद द इशू. और इसमें सर ये जो चीजें होती रही, उसमें हमने अभी जो हमने किया, अभी तो सभी ने बताया, फिर भी मैं दोबारा कहूंगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. No person shall be convicted of any offense except for a violation of the law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at that time of commission of the offense. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. अभी ये सारी चीजों को हम वायलेट कर रहे हैं. हम यहाँ 27A अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसमें और गलतियां कर रहे हैं. दोबारा हम रिट्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं.
It is totally illegal. I think you yourself, a learned, very senior member of this parliament, has brought it to the notice. I think Mr. Premchandra also has brought it to the notice of it. What we did, instead of taking remedial actions, we went on targeting the Maharashtra state. बदनाम करना, फिल्म इंडस्ट्री पूरी बदनाम करना, एक आध आदमी गलत हो सकता है, पूरे इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, फिर कहेंगे हम सारी फिल्म इंडस्ट्री उठा के हम उत्तर प्रदेश में लेकर जाना। अभी आपके पास रिपोर्ट है, अपनी नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कहां है तो उत्तर प्रदेश में, कहां है तो नॉर्थ ईस्ट में, सारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये सारे इसके इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है। तो उसके ऊपर दुर्लक्ष्य है और राजनीति करना बहुत ही गंभीर बात है और मैं उसकी निर्भत्सना करता हूं। न कि राजनीति इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। देश की युवा पीढ़ी अगर बर्बाद होनी जा रही है और सरकार कुछ कदम उठे उसका स्वागत करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके ऊपर राजनीति न खेले, न कोई ऐसे अधिकारी हो जो उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसको प्रोटेक्शन करते हैं, वो भी गलत होता है। हाँ? मैं अधिकारी नहीं हूं, सांसद में आपके पास नहीं हाथ बता रहा मेरे दोस्त है तो अब ये चीजें देखिए सर कि उसमें जो ये आंकड़े जो है ना, कितना होगा तो छोटा होगा। अभी क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंड कमर्शियल क्वांटिटीज, एम्फेटामाइन 22 grams, commercial 50 grams, cocaine 2 grams, small one, 100 grams commercial, hallucinogens, charas, hashish, marijuana, cannabis 100 grams, commercial 1 kg, ganja small 1 kg, commercial 20 kg। अब ये सारे उन्होंने दिए हुए नार्कोटिक्स के, उसमें जो बीच वाला गैप है ना, अगर ये यहां कहते हैं हम 100 ग्राम से लेकर 1 kg, इसके बीच में अगर 101 ग्राम हुआ तो उसकी हालत क्या होगी सर? इसका रेमेडियल इफेक्ट भी देखना चाहिए। अभी मेरे मित्र यहां बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हम लोग इसको हमारा जो एंगल है ना वही गलत भी है, कुछ चीजें उसमें रेमेडियल भी है, मेडिसिनल भी है, उसको भी सोचना पड़ेगा अपने को। हम नहीं सोच रहे सर। अभी इसका परिणाम कौन देखता है? 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 24/7 all channels were showing because it was the son of an actor। उसकी न्यूज 24 घंटे चली और उसी वक्त 21,000 करोड़ का हमने हेरोइन मुंद्रा बंदर गुजरात में पकड़ा, जो अफगानिस्तान से वाया अफगानिस्तान के कंधार से, ईरान से हमारे पास आ गया। हमें रूट भी मालूम पड़ा, हाउ इट केम। इसको फंडिंग कौन कर रहा है? अब इतना पकड़ने के बाद में हमारे चैनल पे एक लाइन नहीं आई सर। कितनी जुडिशियस है देखो, चैनल कितने जुडिशियस है देखो। अखबारों में लाइन नहीं आई और वहां 5 ग्राम मिला भी नहीं तो भी अखबारों में 24 घंटे टीवी पर न्यूज चल रही थी। ये जो बदनामी करने वाला काम होता है, ये बेचारे मेरे कोई सज्जन ग्रस्त थे, उनके पता नहीं था कि वो क्यों बोले हमें, हमारे सांसद ने इस तरह से बात क्यों की, उन्हें पता नहीं था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसको लेकर ये जो चीजें हो रही है, मैं आपके पास इतनी विनती करने खड़ा हूं सर इतने केसेस है, एक 2 मिनट में खत्म, मैं समझ गया सभी लोग 2-2 मिनट में खत्म करें, ज्यादा देर बात नहीं करना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि इतना ही है। ये सभी को देखकर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर क्या ये लीगल है, इलीगल है। illicit, how you define it, cannabis, how you define it। हमारे मंदिरों में कहाँ कहूँ, वो तो चिलिम लेते सब साधु लोग, क्या पीते पता है अपने को? गांजा पीते, चरस पीते, पता नहीं क्या पीते। हमारे यहाँ होली में भांग पीती है, तो भांग इसमें आती है कि नहीं, वो भी तो बताओ। कल को उनको भी लेके जाओगे, भांग पीते रहेंगे तो पता नहीं भांग पी रहे थे, होली मना रहे थे तुम लोग। ये सारी चीजों का असर, सोशल इंपैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी तो देखना होगा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ये जो कदम आप उठा रहे हो, आपका इंटेंशन, वी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर द इंटेंशन, बट ऑन लीगैलिटी इट इज रॉन्ग थिंग टू इम्प्लीमेंट इट, particularly penal things with retrospective effect, and therefore you cannot penalize the person with retrospective effect। और इसीलिए ये 2014 से लगाने वाली बात है,
उसको छोड़कर प्रोस्पेक्टिव करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद सभापति महोदय। तो कांग्रेस की गलती को सुधार रहे हैं। धन्यवाद। 2000 और गलती कर रहे हो। अरविंद जी ने एक बात कही कि सब साधु लोग चिल में कुछ पीते हैं, सब साधु गलत बात है। मैं शब्द वापस लेता हूँ आपके सामने। नहीं, ये सभी साधु नहीं जी बेटे, ये मैं तो वापस गलत कह रहा हूं। वापस लीजिए। सभी सब साधु साधु नहीं। चिलम पीते हैं, ये गलत तो कह रहे सही हो। है ना। ये भी बोलो कि नहीं पीते, चलो सब कोई नहीं पीता, बताओ वो अच्छा लगेगा। मैं शब्द वापस लेता हूं। आलोक कुमार सुमन। जरूर आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया है। यह विधेयक प्रिंसिपल एक्ट द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 को अमेंड करेगा। 1985 में एनडीपीएस एक्ट को लाया गया था जो भी नारकोटिक्स ड्रग्स के कानून हैं उनको मजबूत किया जाए और उपयोग के लिए सही दिशा दी जाए। महोदय, एनडीपीएस एक्ट 1985 में इसलिए भी लाया गया था ताकि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के प्रोविजन को अपने देश में लागू कर सके। एनडीपीएस एक्ट 1985 को वर्ष 1988 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2014 में अमेंड किया गया ताकि ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज के दुरुपयोग को रोका जा सके। महोदय, आज देश में ड्रग्स का दुरुपयोग काफी बढ़ते जा रहा है। यह न केवल शहर तक सीमित है बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाके के न केवल युवाओं बल्कि सबको अपनी चपेट में ले रहा है। गरीब से गरीब बच्चे इसके प्रभाव में आ रहे हैं, जिससे कि अपने देश को काफी नुकसान हो रहा है। इन सब परिस्थितियों में इस विधेयक को आना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। महोदय, वर्ष 2014 के एनडीपीएस एक्ट के अमेंडमेंट से पहले इलिसिट ट्रैफिक को परिभाषित किया गया था, लेकिन वर्ष 2014 में इसेंशियल ड्रग्स के क्लॉज को इंसर्ट किया गया। साथ में यह भी आवश्यक हो गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट त्रिपुरा ने जो हाल ही में कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस में महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, जिसके कारण लेजिस्लेटिव चेंजेस सेक्शन 27A में अनोमली दूर करने के लिए आवश्यक हो गया और इसके लिए एनडीपीएस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को 30 सितंबर 2021 को लाया गया ताकि अनोमली को दूर किया जा सके। महोदय, अगस्त 2021 तक अवेलेबल डाटा के अनुसार देश में लगभग 15.1 करोड़ लोग जिनका उम्र 18 से 75 के बीच है अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो 17.1% है। इसी प्रकार कनाबीज, जो कि मैरिजुआना के नाम से प्रसिद्ध है, इसका सेवन 2.90 करोड़ लोग करते हैं, जो 3.31% है। ओपियाइड्स, जिसको हम ओपीएम कहते हैं, इसका उपयोग 1.86 करोड़ लोग करते हैं, जो 2.12% है। इसी प्रकार सिडेटिव्स, जिसका उपयोग अपने देश में लगभग 1.05 करोड़ लोग करते हैं, जो कि 1.21% है। इनहेलेंट्स, जिसका उपयोग 15.25 लाख लोग करते हैं, जो 0.58% है। कोकेन, जो कि प्रसिद्ध ड्रग है एवं महंगा भी है, इसका उपयोग अपने देश में 9.40 लाख लोग करते हैं, जिसका परसेंटेज 0.11 है। एम्फेटामिन्स टाइप स्टिमुलेंट, जिसका उपयोग अपने देश में 15.47 लाख लोग करते हैं, जो कि 0.18% है। इसी प्रकार महोदय, हेलुसिनोजेंस के उपयोग लगभग 11.01 लाख लोग करते हैं, जो 0.13% है। इन आंकड़ों को देखने से यही पता चलता है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज के गलत उपयोग के लिए कानून बनाना अति आवश्यक है। महोदय, इसमें मेरा कहना है कि ड्रग एडिक्शन की आदत शहर से लेकर गांवों तक प्रभावित कर रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो यह देश की बड़ी आबादी को चपेट में लेगा, जिसके कारण देश को मैन पावर के साथ साथ आर्थिक क्षति भी होगी। इसलिए आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान को सभी वनरेबल जिलों में चलाया जाए, लोगों एवं युवाओं को शिक्षित किया जाए और जागरूक किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि शराब और दूसरे नशीली पदार्थ जो लोगों के लिए हानिकारक है पर रोक की दिशा में सरकारें काम करेंगी। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी लागू किए हैं, जो कि नशा मुक्त बिहार की तरफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।
यह भी कहा जाता है कि 5,000 करोड़ रुपए राजस्व से हानि हो रही है, लेकिन डाटा है कि जनता का 10,000 करोड़ रुपए शराबबंदी से बच रहा है। इससे गरीब निर्धन का जीवन बच रहा है, ताकि इनकी कमाई का पैसा और उनके परिवार पर व्यय हो रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह कदम अभिनंदनीय है। महोदय, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कई टारगेट को अचीव किया है, जो विश्व स्तर पर सराहनीय है। और सरकार का यह भी प्रयास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सभी टारगेट को समय से पहले पूरा किया जाए। अगर हम सभी टारगेट को समय से पूरा कर लेते हैं तो निश्चित ही भारत एक मजबूत और विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होगा। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट के 3.5 जो स्ट्रेंथन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूज इंक्लूडिंग नार्कोटिक ड्रग्स अब्यूज एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल से संबंधित है। वर्तमान विधेयक के आने से एसडीजी के गोल को प्राप्त करने में सहायक होगा। WHO के अनुसार भारत में 30% लोग शराब पीते हैं, जिसमें 13% लोग रोज पीते हैं। खपत के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। 45% हिस्सा आमदनी का ग्रामीण भारतीय केवल शराब पर खर्च करते हैं। 20% की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती है। WHO के 2018 के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 30 लाख लोगों की अल्कोहल से मृत्यु होती है तथा हर साल 5 लाख लोगों की मृत्यु नार्कोटिक ड्रग्स के उपयोग से होती है, जिसमें 30% ओवरडोजेज के कारण होती है। 4 गुना देसी शराब, 5 गुना विदेशी शराब और 11 गुना बियर की खपत पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। महोदय, यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 15 से 64 वर्ष की उम्र वाले 5% से ज्यादा लोग विश्व में नार्कोटिक्स एवं इलिसिटिक ड्रग्स के एडिक्टेड हैं। एडिक्शन इस तरह से बढ़ रही है कि आने वाले 10 सालों में यह बढ़कर 30% तक हो जाएगा। मैं अपने देश की बात करूं तो वर्ष 2019 में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने 2 मीट्रिक टन से ज्यादा इलिसिट हेरोइन्स को जब्त किया, जबकि वर्ष 2018 में 1.2 मीट्रिक टन जब्त किया गया। विगत 5 सालों में 1.89 लाख नार्कोटिक केसेज रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें 2.31 लाख ड्रग स्मगलर अरेस्ट हुए, जिसमें 1500 विदेशी शामिल थे। महोदय, नार्कोटिक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 10 अगस्त 2021 तक लगभग 910 लोगों को द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्ट 1988 के अंतर्गत जेल दिया गया। वर्तमान विधेयक के पास होने से नशा में लत लोगों को नशा से मुक्ति मिलेगी और जो लोग गलत उपयोग करते हैं उस पर रोक लगेगा। महोदय, इसी के साथ मैं इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। सुमन जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी। For letting me speak on the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021. Sir, it's really an irony to stand here that we are having a long, important debate on a subject like drugs abuse, the issues that drugs has related not just in India but all over the world is one of the biggest challenges the youth of India and the world faces. And I think it's a very, very serious debate and we must put all our minds to it to resolve the issue rather than just throwing things at each other in this debate. It would have been much nicer in this debate if beyond, like the Honourable Minister said, that it's just a small clerical change that she has brought this bill. Since this issue is so large and actually it's a burning issue amongst the youth, it would have been nicer if the government would have been a much broader bill which would have really included topics of addressing this issue and not just doing something because the court has done it. And even more interesting is that in this session that we did not debate the farmers' reappeal at all, but we are spending 4 hours on a small clerical. It's really an irony that we are spending 4 hours on just a clerical change. It's quite disappointing, sir, actually. I won't repeat because you have missed most of the things, but I would just like to bring to the notice of the Honourable Minister that what she really said, which is a repeat of what Mr. Premchandran said when he was introducing the bill, sir, that the state cannot make a law taking away fundamental rights envisaged in Part 3 of the Constitution.
And it takes away actually from the Article 21 part which talks about the fundamental rights. So I think the minister really needs to explain, because this is something which has already been discussed. So I won't give, but if especially the points which you made out, because I want to support this bill, but I'm not sure whether retrospective is the solution to it. I think what we really need to do is find a way to stop this menace. And what I'm seeing the government doing, they do knee-jerk solutions. There's always एक केस हो जाता है कहीं, उसकी मीडिया ट्रायल हो जाती है, फिर विपक्ष एक बात बोलती है, हम एक बात बोलते हैं. तो ये ड्रग का मेनेस है, वो यूपीए वर्सेस एनडीए नहीं है, इस देश का ये बड़ा प्रॉब्लम है, अपने बच्चों का प्रॉब्लम. आई थिंक वी नीड टू टेक द लार्जर व्यू ऑन दिस ड्रग इशू. इट्स नॉट योर वर्सेस अस. I was listening to Mr. Bhamre, who's one of the finest MPs we have. He comes from the same state as I do. I was actually, sir, a little disappointed with his speech, because I was confused, because he's a very illustrious doctor. He's an oncologist. His speech was a little confusing for me to understand. It's unfortunate that he's not here. Between what drugs should be there for use of stage cancer vis-a-vis what is consuming, what is eating into the youth of today. I think that clarity did not come from their speech. And what was really even sad and little disappointing was to corner a certain institution. He talked about Bollywood. I see no reason. Bollywood is too strong. They don't need any of us to defend. But I would like to bring some points. And my friend Kalanidhi, who was here from DMK, he also defended the Bollywood. And the data, I want to take little references from my colleagues, is Mr. Gurumurthy from the YSRP. He gave so much data about it. Now, I have one small question to Dr. Bhamre, is when there is so much data of pan-India, why is only Maharashtra's Bollywood getting cornered? And my question to this government is that Bollywood is really put into a corner as there are some evil people who only do drugs. I think it's really very, very disappointing, because it's not fair to put a fraternity. Are you trying to tell me that no other fraternity has drug addicts? It's very, very unfortunate that you do a media trial to anybody in a particular fraternity, especially when the contribution of that unit has to be registered. Sir, it's an industry. It gets crores of jobs to people. It has international visibility to India. India's Bollywood stars give an identity to Indians all over the world. It's not just glamour. There is a lot of hard work, there is a lot of dedication, there is a lot of commitment, and this is the same government which uses a lot of Bollywood stars to push in social messages. So how does Bollywood become bad then? So it's really sad that we are making one case or two cases without any proof whether they are. There are young girls being called for once, twice, thrice to offices of NCB. Why are these young actresses being called, or young actors being called all the time for just what, media special? And if you are, what happened to all those cases? It happens once, 3 days you see it in the media and the story is gone. And I would definitely rank to the notice of what Kalyan Banerjee said in his speech. He's talking about the officers. This is a wonderful bill you have got. Retrospective you are doing. But what happens to all these officers who misuse and abuse their positions? There is a case of one of my colleagues in Maharashtra. His son-in-law was put in for 9 months in jail. 9 महीने उनके दामाद को जेल में रखा. क्या हुआ? वो गांजा नहीं था, तंबाकू निकली. I myself work against tobacco. मेघवाल जी, गुटखा बैन करने वाला राज्य इस देश में कोई होगा तो मेरा महाराष्ट्र है. अजीत पवार जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुटखा बैन किया था. ड्रग्स तो बहुत आगे की बात है. हम तो तंबाकू के खिलाफ, गुटखे के खिलाफ लड़ते हैं. इसके खिलाफ क्यों नहीं आपके साथ लड़ेंगे? आपके साथ कदम मिला के चलेंगे ड्रग्स के खिलाफ. लेकिन आप ये ऑफिसर्स का क्या करेंगे जो कोई, मुझे आई कैनॉट स्टिल बिलीव इट सर कि किसी का दामाद होना कुछ गलती है और उनके दामाद को 9 महीने, इनके छोटे छोटे बच्चे उनके माँ को पूछते थे हमारे बाबा कहाँ गए, तो माँ कहती थी अपने बच्चे को कि पापा जेल में गए. किसके लिए गए? तंबाकू को, जिसको, और आपको पता होगा, there is a kit, there is a system. When you arrest somebody under this section, there's a kit, there are protocols to be followed. You cannot. What happened to that kit? Are you trying to tell me you don't know the difference between ganja and tobacco? And you arrest people like this? Be it Bollywood, being the young women working in Bollywood, be it political positions, what is going on in NCB? And if there are false cases, who will give back the lives to that family?
Is there no accountability of the government? Be it ours, be it theirs. We are willing to work for that menace, but we will not tolerate injustice by any officer against anybody by misusing his position. And that's exactly, I think, what the essence of this bill should be. You cannot use your position and abuse it, plant drugs, arrest people, arrest them, take selfies with them, put them in social media, selectively leak information to... How does the media know everything before even people know about it? So who are these officers and who's going to be accountable? अगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई हो तो go after the big fish. ये छोटे बच्चों के पीछे are we looking? And another thing is addiction is an illness. Addiction is not necessary. That he is not, no, none of these people who you are calling are not drug dealers. They are addicts. उनको बीमारी है अगर उनके यहाँ मिला होगा तो. First of all, we have no evidence also. There are so many, I can tell you, sir, cases after. There's no time here today to speak on that. But I would like to tell you there are cases which have so many flaws, they don't even test the person that is arrested. So how do you know that person has consumed or has drugs? And even if they don't have drugs, they're kept in jail for 30 days. Is this the kind of law we are living in, just at the whims and fancies of one officer? This is the kind of power we are going to give to an officer who will just misuse and abuse it politically, socially, and blackmail people. They will call and ask for crores of rupees and lakhs of rupees to people. This is not justice. This is not the justice that this government talks about. So I urge this government to give justice, take this bill back. We are not against fighting. We will walk with this government to fight a law against this bill, but we definitely want them not to crucify people. There are 26 fake cases like this. Blackmail. And Bollywood you talk about. We are so proud in this house. We have Hemaji. We have Kiran Kherji. And I think we have Mr. Deol, who I haven't seen in a while. But it's Hemaji and Kiranji. Such good speakers. Fine women. They're not just representing Bollywood, we feel close to them. Because they're one of us, they're one of the most eloquent ladies we have. We are so proud that they joined politics and they are a part of our parliament today. So it's really unfair to call Bollywood names, and it's something I think we should all put our minds to it and not corner any fraternity which is so wonderful and contributing in all social causes of India. The other last point, sir, is prevention is much better than cure. So why aren't we looking at prevention and looking at the larger picture in this house? When you bring bills to legislation, they don't come here for correction, sir. This is the largest, supreme of democracy is our Indian parliament, the largest democracy in the world. And then are we going to spend hours on small corrections? Why don't we take the larger phase of this and look at the whole larger picture, have an extensive debate and bring in comprehensive bill. That's what we are asking for. It would have been much nicer. Another small notice I not which is beyond this is even about fertilizers. This is something which came in my reading, sir, in the newspapers about 5-6 months ago. There was a fertilizer subsidy which Government of India gives. They are very proud of that. We are all proud about subsidies which are given to our farmers. There is a cartel in a certain state. I won't name the state because that's not why I'm saying this. But the subsidy which goes for rice and food is moved towards marijuana. This is what? Because naturally, if there is marijuana available, it's planted somewhere. So there is a big story even in the media that all the subsidies which go for rice and paddy and food is diverted towards marijuana. So what are interventions of this government? What interventions are you doing to stop such subsidies? I think this is what the larger, I think you need to take the larger picture, not just be stuck in personalities. And I would really like to bring it back to the notice of this House that we would definitely like to support a bill which will help eradicate drugs, abuse, substances, but I think any consumer needs emotional help. He doesn't need to go to jail. Jail doesn't resolve problems. It aggravates problems. So if a child or a human being is an addict, he needs to go or she needs to go to rehab and not to a jail. So I again request humbly to the Honorable 303 government that you have a very good, you have a lot of strength, not that we see it always, but I request them that they must bring a comprehensive bill. We will in one voice send a message to this nation that India stands against drugs and we will not tolerate any such things. So I think if you want us to support this, please take this bill back,
bring a comprehensive bill. Let's fund a committee for this and get all addiction out of this nation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now, Sri Ratanlal Kataria ji. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021 पे समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जिस प्रकार से नशे की लत सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है, इसका संज्ञान न केवल भारत बल्कि दुनिया के सभी देशों ने मिलकर लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका संज्ञान लिया और उसको लेकर इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड इसकी भी स्थापना की गई और अलग अलग प्रकार से सारी दुनिया की 3 कन्वेंशन इस नारकोटिक्स के विषय को लेकर संपन्न हुई और जिसमें सभी विश्व ने मिलकर इस पृथ्वी से नशे को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया। लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं रूप में देखने को मिलता है। भारतवर्ष में नशे की लत को रोकने के लिए 3 स्तर के ऊपर कई डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, वो ये जो नारकोटिक्स की जो ड्रग्स हैं इनके फैलाव को रोकने के लिए, इनकी तस्करी को रोकने के लिए सारे देश के अंदर काम करता है। उसके जगह जगह के ऊपर रीजनल ऑफिस बने हुए हैं और इसके साथ ही हमारे देश का स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों की इलाज करता है जो ड्रग्स का शिकार हुए हैं और कई प्रकार की बीमारियां उनको ड्रग्स से लग जाती हैं। ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग काम करता है। इसके साथ साथ ही मुझे सामाजिक अधिकारिता और सामाजिक न्याय विभाग में राज्य मंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है और उस समय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विंग जो था वो इस ड्रग एडिक्शंस को लेकर काम करता है और पिछले साल ही 15 अगस्त को सारे देश के 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और
डिपार्टमेंट ने इस बात का प्रण लिया कि आने वाले समय में हम इस देश के 100 जिलों में जो नशा मुक्ति है, इसको लेकर हम काम करेंगे और सारे देश को नशा से छुटकारा हम दिलाएंगे। समय समय पर जैसा कि मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के जो अन्य फॉर्म्स जो हैं वो इस विषय को लेकर बने हैं और उन्होंने समय समय के ऊपर अपनी बातें इस दुनिया के सामने रखी हैं। और आज जो ये एनडीपीएस बिल में अमेंडमेंट का जो विषय आया है, जिसके अंतर्गत हम धारा 27A के अंदर एक मामूली सी परिवर्तन की बात लेकर आए हैं। हालांकि इसमें कोई नए विषय की एडिशन नहीं है और ये अमेंडमेंट केवल उस 1985 का जो बेसिक एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जो समय समय के ऊपर परिवर्तन हुए और 2014 में भी एक परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन करते समय उसमें एक छोटी सी चूक हो गई, एक बात छूट गई और उस छोटी सी चूक का सहारा लेकर त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस गया, ड्रग एडिक्शन का एक मामला गया, तो हाई कोर्ट ने वहां पर टिप्पणी की कि एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है और जिसके कारण हम इस केस के अंदर कोई पूरा निर्णय नहीं ले सकते और जो मूल भावना थी एक्ट की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये टिप्पणी आई और सजा होने से कुछ लोग बच गए। तो यह दोबारा से फिर इस प्रकार की अमेंडमेंट आई है कि जो पनिशमेंट के जो प्रावधान किए गए हैं, बड़े कड़े प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं, उनको लागू करने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं दवाइयों के अंदर भी ड्रग्स का थोड़ा बहुत जो प्रेस्क्राइब लिमिट है, उसके अंतर्गत जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका प्रयोग भी मनुष्य का जीवन बचाने के लिए किया जाता है। तो वो जो कुछ आइटम्स हैं, उन आइटम्स को छोड़कर बाकी जो नशे का व्यापार है, उसको सारे देश में बंद करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे पास और मेरी लोकसभा के साथ साथ
मैं कई बार देखता हूं कि पंजाब की एक बहुत लंबी सीमा लगती है और पिछले वर्षों में पंजाब में जिस तरह से नशे के व्यापार ने हमारे नवयुवकों का जीवन बर्बाद किया है, वो एक सोचने वाला विषय है। और हम किस प्रकार से अपने देश के नौजवानों को इस लत से बचा सकते हैं, इसके ऊपर मंथन करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो राष्ट्र नशे के पदार्थों की तस्करी करते हैं, उनके ऊपर भी भारत सरकार शिकंजा कस रही है। और कई बार देखने को मिलता है कि कई बड़ी बड़ी खेपें नशे की जो हमारे देश के अंदर आने की बाट में बॉर्डर के ऊपर दिखाई दी, हमारी फोर्सेस ने उन सब को छीनने का एक बहुत बड़ा काम किया है। महोदय, कई बार हमारी चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान से ड्रग्स हमारे देश में काफी आती है और इसके साथ ही चाइना से भी आने की बातें हम सुनते रहते हैं, क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं भारत की उभरती हुई शक्ति को देखकर भयभीत हैं और कहीं ना कहीं अपनी इस रणनीति के अंतर्गत काम कर रहे हैं कि भारत को कई प्रकार से क्षति पहुंचाई जाए। कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सहारा लेकर हमारे देश में दखल करने की कोशिश करता है और अब पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान, जो हमारा मित्र देश है, और भारत ने अफगानिस्तान के अंदर स्थापित करने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात वहां की सरकार के साथ मिलकर काम किया है, वहां के विकास के लिए काम किया है। लेकिन जब से वहां पर तालिबान ने वहां के प्रशासन पर कब्जा किया है, तब से भारत की आशंकाएं और बड़ी हैं कि एक और थर्ड प्लेयर हमारे देश के अंदर नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कोई षड्यंत्र रच सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारी सरकार होम डिपार्टमेंट के माध्यम से, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के माध्यम से, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के माध्यम से और इसके साथ ही आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी हमारे बीच में हाउस में बैठी हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने नशा मुक्ति के काम को सारे देश के अंदर बढ़ाने के लिए
जिस प्रकार से कई सौ करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर किया है और उस बजट के बल पर हम 272 जिलों में नक्शा मुक्ति केंद्र जो है वो चला रहे हैं और 100 जिलों में हमने आने वाले समय में अपने देश से एक भी केस नशा का ना मिले उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कटारिया जी जिस प्रकार से कंक्लूड करिए। हमें सहायता मिली है, आज हम इस देश की यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, आज हम इस देश के कॉलेजेस के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, हमारा देश का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से आज हमारे देश के अंदर सैकड़ों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं जो हमारे देश को, हमारे नौजवानों को इस नशे की लत से बचाने का काम कर रही हैं। आज जिस प्रकार से एक ये छोटी सी अमेंडमेंट सरकार लेकर आई है, इसमें कोई नई क्लास शामिल नहीं है। इट इज एन अनोमली जो थोड़ी सी बची थी उसको दूर करने का एक प्रयास इस बिल के माध्यम से हम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपने इस संकल्प को फिर से दोहराएंगे कि हम अपने देश से इस नशे की आदत को समाप्त करने के लिए सारे भारतवासी मिलकर काम करेंगे और जो भी देश बुरी नीयत से हमारे देश के अंदर नशे की तस्करी करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और किसी भी कीमत पर उनको सजा से नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। के सुरेश। Thank you very much, Chairman sir, for giving me opportunity to put forth my views on the narcotic drug and psychotropic substances Amendment Bill 2021, which seeks to replace an ordinance promulgated on September 30 this year. As the most important question concerning this bill has been raised by several of my colleagues here, that how can a criminal law be amended with a retrospective effect? I am repeating the question as the government is committing an error in moving this bill, and the government must redraft the bill and come fresh. I would also refer to the Chief Justice of India, stating that the legislature has passed laws without conducting studies or assessing their impacts, and this half-baked legislation is a perfect example of the sentiment raised by the Chief Justice of India. Honorable Chairman, sir, the statement of the objects and reasons for the bill states that, I quote, the NDPS Amendment Bill 2021 would replace an ordinance promulgated in September to correct a drafting error in a 2014 amendment to the Act. Before 2014 amendment clause 8A of section 2 contained subclauses 1 to 5, which define the term illicit traffic. This clause was relettered as clause 18B by the Drugs and Psychotropic Substances Amendment Act 2014.
as a new clause 18A in section 2 defining essential narcotic drug was inserted. However, inadvertently constitutional change was not carried out the section 27A, the NDPS Act, unquote. So, Chairman, sir, in a recent judgment, Justice Talapra and S.G. Chaddopadhyay, Honorable High Court of Tripura, has held that until the appropriate legislative change occurs by amending Section 20A of the NDPS Act, appropriate subclause 1 to 5 of Clause 18A of Section 2 of the NDPS Act shall suffer effective deletion. So, an entire clause with such wide-ranging provisions for important act was ignored for 7 long years, and now after the court pointed out that the effect of the deletion will be resulted, the government came running. Look at the section 27A of NDPS Act. The provision reads that whoever indulge in financing directly or indirectly any of the activities specified in subclass 1 to 5 of class 18A of subsection 2 harbors any person engaged in any of the aforementioned activities, he shall be punishable with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may be extended to 20 years, and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may be extended to 2 lakhs rupees, provided that the court may, the reason to the recorded in the judgment, impose a fine exceeding 2 lakhs rupees. Chairman, sir, now we will look into the reason of section 27A getting indeplorable. The text of the provision says that offence mentioned under section 2(8)A subclause 1 to 5 are punishable through section 27A. However, the section 2(8)A subclause 1 to 5, which is supposed to be the catalogue of offences, does not exist after 2014 amendment. So when the catalogue or description of offence itself is absent, how could the main provision operate with efficiency, and how it will dispense fullest justice? Sir, so if section 27A penalizes a blank list or a non-existent provision, it can be argued that it is a virtually inoperable. The High Court ruling further ordered that both the central government and the state government shall publish a notification bringing about the content of this order in short for the public notice, so that the requirement of Article 20 of the Constitution of India is not diminished. Article 20 of the Constitution guarantees protection against double jeopardy. Article 21 says that no person shall be convicted of any offence except to violation of the law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to the penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. Honourable Chairman, sir, I am not going to all the details because honourable members are already mentioned here, and also so many other members want to speak. Sir, one must note the 16th Loksabha held its sessions between June 2014 to February 2019. During these 5 years, 133 bills were passed and 45 ordinances were promulgated, and not even once did the government thought the promulgating the amendment till Tripura High Court made its mention and pushed this incompetent government to reality. Sir, therefore, even when the bill is necessary
is correcting a drafting error. That makes an important clause inoperable. I say that this government is inefficient and incompetent and lethargic in matters of governance, and its failure and willful deterring on the important legislation in a subject related to Narcotic Act is a serious lapse. With words I conclude. Thank you, sir. Thank you. Now, Sri Danesh Ali. Once you miss the bus. Thank you very much, Chairperson, sir, for allowing me to speak on the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill. ये वैसे तो बहुत छोटा सा बिल है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले दिनों देश में जिस तरीके से नारकोटिक्स के ऊपर चर्चा हुई और कई ऐसे केसेस भी सामने आए, इसमें सबसे जो दिक्कत की बात है वो ये है कि इस बिल के पास होने के बाद इसके दूरगामी परिणाम बहुत होंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू पास दिस बिल फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अब इसमें मेरे से पहले कई लर्नेड कोलीग्स ने, इंक्लूडिंग सभापति महोदय, आपने भी इसके बारे में हाउस को एनलाइटन करने की कोशिश की. अब मैं समझता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री जी यहां बैठी हैं, वो जरूर इसका नोट लेंगी, और मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर आज हम इस टाइप का कोई क्रिमिनल लॉ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास करते हैं, तो कल को ये परंपरा जो है, ये बहुत हम गलत परंपरा आज यहां डालने जा रहे हैं. मान लीजिए अभी तक किसान लोग धरने पर बैठे थे दिल्ली घेर करके, उन पर कोई केस हुए, आप आने वाले वक्त में एक नया कानून ले आए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि दिल्ली के चारों तरफ अगर कोई ऐसा धरना, ऐसी कोई पंचायत इस तरीके का डेरा डालो, घेरा डालो करेगा, तो उसके ऊपर जो है 10 साल की सजा होगी, या उसको उम्र कैद होगी, या उसको फांसी पर लटकाया जाएगा. इस तरीके का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला बिल मैं समझता हूं नहीं लाना चाहिए था, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल जो है यहां आना चाहिए. हम सब जानते हैं किस तरीके से ड्रग्स जो है, ड्रग्स मेनेस जो है, आज स्कूल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर, कई रिलीजियस गैदरिंग्स में भी होता है. इस पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज डायग्नोस के बाद होता है. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, बॉलीवुड ने इस देश को पहचान दिलाई है. हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, और वहां किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो हमसे पूछा ही जाता है, अरे आपने शाहरुख खान की वो फिल्म देखी, आपने ऋतिक रोशन की वो फिल्म देखी, आपने सलमान खान की वो फिल्म देखी, आपने मतलब किसी और एक्टर की वो फिल्म देखी है. अब उसमें क्या करूं मैं भाई? आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, दिलीप कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, वो कोई भी हो, सबकी पहचान, सबने पहचान बनाई है. मैं सभापति महोदय, इस बात में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें बीमारी की जड़ पकड़नी है. आप पूरा देश जानता है कि किस तरीके से गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट पर 20,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जो है वहां से आई, और आप जहां जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप देखिए शोर मचाते हैं. ये मैं बोलने खड़ा होता हूं, अरे इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैक हो जाता है. हम जानते हैं जब प्रधानमंत्री जी का ट्विटर जो है सेव नहीं है, तो देश के पोर्ट्स कहां से सेव होंगे आपके राज्य में, हम जानते हैं.
ऐसे ऐसा मत कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जहां पर हमें इलाज करना है, जहां पर हमें रोक लगानी चाहिए, वहां पर हम नहीं लगा रहे हैं। जहां पर टन्स एंड टन्स के हिसाब से गांजा ड्रग्स जो है इंपोर्ट हो रही हैं, वहां पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बॉलीवुड स्टार के बच्चे के पास 5 ग्राम पकड़ी जाती है, वो भी नहीं पकड़ी गई, उसको जो है महीनों महीनों जेल में आप डाल के रखते हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा आखिर में कि माननीय वित्त मंत्री जी को इसका जो हाउस का एक सेंस है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए और ये जो बीमारी है ड्रग्स की, इस बीमारी की जड़ में जाइए कि कैसे विदेशों से टन्स ऑफ ड्रग्स जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। हम मुंद्रा पोर्ट पे नहीं रोक पा रहे, वो पोर्ट हमने प्राइवेट कर दिए हैं, आजकल प्राइवेट कर दिए हैं, तो इसलिए वहां पर रोकिए, बजाय इसके कि छोटी छोटी जो नई कलाकार जाती हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में आप रोज चक्कर लगवाएं, वहां छोटे छोटे अधिकारी बैठ करके उनको ब्लैकमेल करें, उनसे वसूली करें। ये देश जो है ये सब देख रहा है। मैं सभापति महोदय इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, इस आग्रह के साथ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आप लेकर आए हाउस में, जरूर हम इसका समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दिनेश अली जी। हमारे और भी करीब 9 या 10 ऑनरेबल मेंबर्स हैं बोलने के लिए, और फिर मंत्री जी के तरफ से भी कुछ रिप्लाई दिया जाएगा। तो 2 या 3 मिनट करके बाकी ऑनरेबल मेंबर अगर बोल लें तो 6 बजे के अंदर हम इसको समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर एस.टी. हसन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत इंपॉर्टेंट बिल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और समाज के अंदर जो मेन बुराई है आज, वो इस नशे की वजह से सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स के कैटेगरी में शराब को भी लाना चाहिए। ये शराब पीने के बाद, थैंक यू सर, शराब पीने के बाद जितने क्राइम्स हो रहे हैं वो मेरी और आपसे छुपे हुए नहीं है। कितने मर्डर हो रहे हैं वो ज्यादातर शराब पिए हुए लोग करते हैं। और यहां तक देखा गया कि इंसानियत इस कदर गिर जाती है शराब पीने के बाद कि हमने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि बाप बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर पाता। सीरियस बहस हो रही है सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भागती दौड़ती और कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे थोड़ी बहुत एंजाइटी या टेंशन ना हो। बहुत से लोग टेंशन की दवाएं खाते हैं, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए, वो उनको मिलती भी हैं, उस पर सख्ती ना हो। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं आपको, आपसे कहना चाहता हूं कि इस कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जो मिसयूज हो रहे हैं वो आपने और हमने अच्छी तरह से देखे। मैं नहीं बताना चाहता क्या मिसयूज हो रहा है, लेकिन मैं मंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि एनडीपीएस एक ऐसी चीज बन गई है कि असरदार लोग छोटे लोगों से अक्सर ये कह देते हैं सोसाइटी में कि जानते नहीं हो एनडीपीएस में बंद करा दूंगा, और वो बंद भी करा देते हैं। ये मिसयूज थानों पे क्यों होता है? पुड़ियां रखी जाती हैं, निकाली जाती हैं जेबों से, और उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है। 6 महीने तक उसकी सुनवाई नहीं होती। इस मिसयूज को बंद किया जाए। मैं बाकी मिसयूज जो हुए हैं, जो हमारे सब साथियों ने दिए हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हो या और जगहों के हो, मैं उसको नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ आपसे आखिर में, क्योंकि आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि नशे का व्यापार पे बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लगाई जा रही है, वो लोग अपने आखिर में आके घरों के सामान तक चुराते हैं, वो बेचते हैं। सोसाइटी पूरी खराब हो रही है। स्कूलों से लेके आम बच्चों को भी ये नशे की पुड़ियां शुरू में फ्री में देते हैं, बाद में उनसे खरीदवाते हैं। मेरी सिर्फ 2 ही डिमांड है सर कि इसके मिसयूज को, इस कानून के मिसयूज को अच्छी तरह से रोकना चाहिए। इसके लिए भी कोई कानून बने, भले से उस अधिकारी को मामूली सजा मिले, लेकिन सजा मिलनी चाहिए जो बिला वजह किसी को फंसाता है। और शराब को भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स में लाना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। मोहम्मद बशीर। Sir, thank you, sir. So this NDPS amendment bill, its scope is very limited.
government should have brought a new comprehensive legislation. We were expecting that. Anyhow, we demand that such a comprehensive legislation in this area is very much required. While talking about this subject, sir, I am of the firm opinion that it is high time to open a holy war against the dangerous evil which spoils the goodness and greatness of this nation and spoil the human relations. Sir, ill effects of this drug abuse, I don't want to elaborate it. Most of the speakers were mentioning about that. This is disturbing peace, love and affection in the family, capsizing the future of the budding generation, sowing the seeds of enmity, atrocity against women and children. It kills the morality of our nation. Sir, it is such a dangerous thing. Sir, in this drug abuse, the most suffering section is women. A study released by the United Nations International Drug Control Program and India's Ministry for Social Justice and Empowerment says that misuse of drugs has a serious impact on women as mothers, wives and sisters of misusers, but this aspect has not been adequately addressed. That is a very, very important thing to be noted. Sir, what exactly is the things to be done? Nasha Mukta Bharat, all these things are very good. In order to make these slogans into reality, policy of the government is very important, sir. Now, every day we are reading the stories of killing, looting, and spoiling the family relation, gang rape, and atrocities against women and children. What exactly is the villain behind this, sir? I am of the firm opinion that it is the question of, the alcohol and this kind of drugs. What is the solution? People may agree or disagree with me, sir. I would like to say that the only solution is complete prohibition. I wish to say that Article 47 of the Constitution says that duty of state is to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health. Okay. The state shall regard raising the level of nutrition and standard of living of people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular, the state shall endeavor to bring about prohibition for all consumption except for medical purpose of the intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. Thank sir, you. Sir. I just started, sir. I am coming here. So what I am saying is, the prohibition case when it comes, everybody is saying that it will affect the revenue. Sir, we may get some revenue out of it. It's a fact. But at the same time, should we allow our children to be drowned in this liquor? This kind of tendencies are developing, sir. Sir, what I am saying is, we have to remember Mahatma Gandhi. He said, a snake can only destroy the body, but the curse of drink corrupts the soul within. Sir, what I am saying is, we had to start the battle against. You have concluded. Thank you very much. I am concluding, sir. 1 minute. What I am saying is, it is not an easy task to fight and defeat this mafia. It's a very Herculean task, we all know that. But we had to work together in bringing this kind of legislation and make an end to this kind of dangerous move prevailing in this country. Thank you. With a few words, sir, I can go. Thank you very much. Thank you, Srimati Aparupa Podar. 3 minutes. Thank you, Chairman, sir. Pardon. And when Srimati Podar is going to speak, as Adhir Ranjan ji is not here, I would like to mention here that in 2011, when this bill amendment was being discussed, Mr. Ahluwalia was of the opinion that, especially in eastern India, we extract posta, machli Posto. She is aware. That's a very good delicacy that is actually extracted. But after this bill has come into operation, that delicacy is totally not available anywhere. And eastern India, in Bihar, especially Bengal, Bihar and Odisha, we used to use that.
And yes, Ms. Srimati Podar. Thank you, Chairman, sir, for giving me a chance to speak on narcotic drugs and psychotropic substance amendment bill. Though it is very small bill and very small amendment is there, but it's a crucial amendment brought by the government for correcting the drafting error. The Act regulates certain operations such as manufacture, transport, and consumption related to narcotic drugs and psychotropic substance. The bill aims to amend only a small change, but the problem that our country is facing on account of increase of consumption of drugs and how the youth are destroying their future by consuming dangerous drugs. The total number of suicides due to drug alcoholic addiction, if we see from 2018, 19, 20, it has been increased. And the number of cases registered under NDPS Act is also increased in recent 2016, 17, 19, 20. The currently jailed under in trial are 2,58,883, out of which NDPS Act alone accounts 27,072 prisoners. It is high, it's a huge number. The figure points out towards the dangerous pictures how our drug abuse and users among the young generation are destroying their future. We have to take steps regarding it, and I have few suggestions that regarding this. The National Mental Health Survey 2015-16 shows a treatment gap of more than 70% of the drug for the drug use disorder. The recent nationwide survey on substance use disorder has replicated the result with nearly 75% treatment gap of the drug use disorder. Added to the misery, merely 5% of the people with drug use disorder received an inpatient care. This large treatment gap indicates the poor accessibility, utilization and quality of healthcare. To meet this need, one should expand the treatment, rehabilitation facilities, substance use disorder. I would request the government to sanction more de-addiction centers, rehabilitation centers. The Union Social Justice Ministry has recently proposed an important amendment to the narcotic drug and psychotropic substance to treat those apprehended with small quantities of drug as victims rather than culprits. Now, government should take a note of it and 2 minutes, sir. And the stringent bail provision of section 37 of this act, which the court have that the reasonable ground to believe that the accused is not guilty, that he is unlikely to commit another offence while on a bail. The prisoner, if we see the prisoner statistics, we see the number of increase in these prisoners from this NDPS Act. I request that there should be a reform in section 37 because number of cases why it has been increasing, and it is very important tool if we are not liking anyone or politically, we can easily use it as to victimize this person, because we have to think about the families also, the prisoners who are in the jail, their families, even many people who are in jail, they belong to very poor family also, who cannot even afford the judicial thing also. For this, put across the point very with this, I conclude. Thank you, sir. Thank you. Now, Sri N.K. Premchandra. Thank you very much, sir. Sir, at the time of introduction of this bill, I have made my observations regarding the constitutional validity of the bill. Unfortunately, at the time of introduction, the Honourable Minister who has introduced the bill has not answered or responded to the questions raised by the members from the opposition. So I hope that the Honourable Finance Minister may respond to the constitutional validity of the bill. Why? Because almost all the learned members have already explained regarding Article 21, violation of Article 21 is there.
Since it is a fundamental rights comes under Part 3 of the Constitution, Article 13 will come to play that the state shall not have the right to make any law which abridges the fundamental rights enshrined in Part 3 of the Constitution. That is the only technical objection which we are making in this, or even at the time of introduction. I hope that the Honourable Minister may respond to it, and I think the validity or the justification may be done by the Honourable Finance Minister. Sir, when we discuss about this bill regarding the legislative drafting and the drafting error, see, recently the Honourable Chief Justice of the Supreme Court has observed in the open court that it is finding it very difficult to interpret the legislative provisions made by the legislature because it is vague, unclear, indefinite. This is the observation made by the Chief Justice of India in the open court. This is a very typical example for it. Because in the legislative drafting as well as the passing of the legislations, much care, caution has to be taken. I do admit, even by moving the statutory resolution, Bhagwam ji, you have already stated that this has gone to the standing committee. I do agree. So that the way in which we are approaching the legislative process has to be taken very seriously, not only from the part of the government, the entire house has to be very serious about the legislative process. We have to abide by the rules and we have to keep the provisions. Even a full stop, a comma or omission of a particular word will have its own ramifications. That is very well established or very well evident in this legislation also. That is why the Tripura High Court has made their observation, and now we are coming with an amendment, and in the amendment also the same constitutional validity question is being agitated. Therefore, we have to give due importance or significance to the legislative process. That is the first point which I would like to make. Sir, regarding, I am not going to the other technical objections. I request your good self kindly, the objections which I have raised at the time of opposing the introduction of the bill may be treated as part of my speech also. Sir, I have 5-6 suggestions to the Honourable Minister. I also request to the Honourable Finance Minister, please come out with a comprehensive legislation. Why? Because there is a lot of misuse of these provisions of this National Drugs and Psychotropic Substance Act, NDPS Act is there. Misuse is there, abuse of the provisions of the Act is there. So a comprehensive legislation amendment is required. I would like to say that is, we have to abide by the principles of 1961 Single Convention that the people have a right to pain relief just as they have a right to protection from the inappropriate non-medical use of opioids medicines. Sir, there is a 1961 convention, Single Convention, by which it is accepted throughout the whole world that the right to have pain relief, just as that of protection, that equal importance is there. So therefore my suggestion is that lot of palliative care units are there in our country and so many demands have come from their side. The first suggestion which I would like to make to the Honourable Minister is a clear-cut definition is required regarding the licit and illicit activities. Licit entity and illicit entity have to be clearly defined. Now the definition clause is vague, not clear and not comprehensive. So my first suggestion is licit and illicit should be distinguished in clear terms, for which an amendment is required, because any person engaged in the cultivation of any cannabis plant for industrial purposes or horticultural purposes under a general or special order issued under Section 14 of the Act, all these things should come within the definition. Otherwise, it will be creating so many difficulties. And it also includes any person involved in the administration of treatment to a patient or addict or others where the supply of narcotic drugs and psychotropic substances is a medical necessity. That should also come within the frame of the definition. That is the first point. So clear-cut distinction is required as far as licit and illicit. And the second point is that a new clause to be introduced, compounding of offences by licit entity, where the contravention involves acts that do not constitute a diversion. If it is not a diversion, diversion also defined, this definition is there, the intentional dealing and transfer of any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance
by a licit entity or any person in his employ or acting on his behalf to another person for illicit traffic is diversion. Suppose if it is not done for diversion, then compoundable, it has to be made as a compoundable offense if it is done by a licit entity. And the third point is, sir, amendment to section 35, no presumption of culpable mental state in case of licit entities. That is another point. Sir, the fourth one is, I'm just reading it, amendment to section 41 to provide certain safeguards for entry, search and seizure involving a licit entity. I'm all talking about the licit entity, not the illicit entity. And also the last point which I would like to make is regarding section 42 to provide certain safeguards for arrest in case of a licit entity, because nowadays so many palliative centers, so many entities and NGOs are there, but unfortunately harassment is also there. In order to have a protective measures for them, a comprehensive amendment in this is highly regarded. Even in the United States of America, in other developed countries, it is well accepted and it is being publicly sold. I'm not supporting that case, but the licit entity should be protected from this. Not throughout the country, but in certain states of United States. Yeah, no, in Chicago, last month I was there in Chicago, I have seen many shops. In certain states. Maybe. Public shops are there. I'm not recommending it, but the licit entity for medical purposes and for palliative care purposes, they should be protected. Nowadays, these officers unnecessarily harassing these agencies. That is why I have received so many representations. When the Honorable Ministry is going to introduce this bill, I have received so many representations by which the main sole demand is to have a comprehensive bill so as to have the protection of the licit entity. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Mr. Arif. Thank you, Speaker, sir, for permitting me to speak on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021. Sir, on a very few occasions, this kind of bill to rectify the mistake committed by drafting the previous bill should have been discussed in this House. This interestingly that we are rectifying the mistake committed 26 years ago, sir. Sir, therefore, this amendment bill should become an eye-opener for all of us, and especially for the government, which has no time to send the bill the proper scrutiny and the proper discussion and the concerned standing committee, etc. Sir, coming to the bill, all other former speakers have mentioned that coming to the content of the bill, it gives the retrospective effect for this amendment from 1st May 2014, which is unheard in the history of the criminal jurisprudence. Sir, so what will happen the cases registered under the bill after 2014 till date? Whether the case is called for the new trial, whether those already punished will be again punished. I hope the government has to answer to this House for such crucial aspects. All other speakers already mentioned that the double jeopardy is against the principle laid down by the Constitution, Article 20. So, moreover, the recent days, there are so many reporters coming from the news daily. The illicit drugs are available in the online platforms. That's available in the online platforms there. So we have to make a good legislation including this type of online transactions of illicit drugs. So we have to then come to an ordinance. Well, in our state there is a proverb that you waited up to cook the food, but why can't you wait till the court gone away? The Tripura judgments has came on notice that September 30 to 2021. But the 20. But the ordinance came to September 30, 2021. Only 1 month. Year later. The Parliament session is the law making by executive through ordinance is against the concept and the principle laid down by the founding fathers of the Constitution.
Thank you. Thank you very Sir, much. sir. So we have to, only one word. We have to save the new generation from the evil effect of the narcotic traps. We are already joined with the changes coming in the fall. But we have to care about the legislation. We have to cover about the legislation and conclude. Thank you. Thank you. Pratap Chandra Sadangi. Honorable Chairman, sir. Sir, I stand to support the bill. The main objective of this amendment is to replace an ordinance which was promulgated by our Honorable President to rectify an unintentional error, drafting error, which was committed during the amendment of NDPS Act 1985, during the course of amendment in the year 2014. Sir, the Act came into force in 1985, and over the years it has been amended thrice in 1988, 2001, and 2014. Sir, before going into the details, I would like to point out some of the adverse effects of these dangerous drugs. It decreases the immunity of the consumer, leading to severe diseases, and due to flow of money, the person becomes very poor and leading the family into a very miserable condition. Premature death is occurring due to the consumption of drug, rendering the family helpless. So domestic violence, social violence, law and order problems are the consequence of drug consumption. Man becomes a mason. Sometimes people commit murder at the instruction of their financer who finance them for drug consumption. Crime increases, anti-national activities also increases. Life becomes very miserable and brain becomes inoperative, sometimes dangerously active. So, such a stringent act was quite necessary. Sir, NDPS Act came into force on 14 November 85. The Act regulates certain operations such as manufacture, consumption and trafficking of NDPS. Sir, the ordinance is intended to rectify this error. In 2014, the error crept in when the Act was amended and clause number of the definition for such illicit activities was changed. However, the section on penalty financing these illicit activities was not amended and continued to refer to the earlier clause number of the definition. Sir, prior to 2014 amendment, clause 8A of section 2 of the original act contained subclauses 1 to 5 wherein the illicit traffic has been defined. This clause was related as clause 8B by the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Act 2014 as a new clause 8A in section 2 defining essential narcotic drugs was inserted. However, inadvertently, constitutional change was not carried out in section 27A of the NDPS Act. Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji was quoted as saying the statement of objects and reasons of the bill. She said, the amendment does not create any new offence, but contains a legislative declaration that reference of clause 8A always meant the corresponding renumbered provision in the clause. Sir, exactly the legislative intent is very clear. Although there was a drafting error which is not a small offence, but the purpose of the legislation was very clear. So it is natural that giving retrospective effect to a criminal law is normally not accepted. But under these special circumstances, we should always think whether a criminal getting the clue of a drafting error will be let free. This should also be deliberated. Sir, the amendment also seeks to rectify this anomaly by making changes in section 27A of the said act in order to carry out the legislative intent of the statute, which has always been to read clause 8B in section 27A
and already stood therein, Honorable Finance Minister said, sir, exactly why this ordinance became necessary. This was pointed out, this unintentional commitment of error, drafting error, was pointed out by the Honorable Court in Tripura, where an accused plead that he should not be charged under the section, since it pointed out a blank list. So, for this drafting error, now this was the Honorable High Court. Honorable Court advised the government to make an amendment, and since the Parliament was not in session, the President promulgated this ordinance, and now it is to be regularized. So I think it will be prudent to regularize this through this amendment, and this drafting error is to be rectified through this amendment, and this will be in the great interest of the nation. With this I conclude. I support the bill. Thank you. हनुमान बेनीवाल जी हैं, बोलेंगे? 3 मिनट है आपके पास. 3 minutes, please. सभापति महोदय. 3 minutes. Yes. कौन? Your time starts now. सभापति महोदय, आज सदन के अंदर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 पे चर्चा हो रही है. मेरे से पूर्व पक्ष और विपक्ष से विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी. सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज नशे की प्रवृत्ति नौजवानों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर इस कदर पनप रही है कि सबसे ज्यादा अपराध नशा करने के बाद, चाहे वो 16 साल की उम्र का लड़का हो, चाहे 15 साल की उम्र का हो, 17 साल की. कल मेरे जिले में ये घटना हुई. एक 17 साल के लड़के ने अपने 12 साल के कोई पबजी गेम होता उसको खेलने के लिए, उसमें पैसे हार गया तो उसका अपहरण करके उसको मार दिया. उसके पीछे कई लोग और होंगे, भाई नाबालिग है तो सजा कम होगी, माइंड होगा, लेकिन नशा करके अपने भाई को मार देना इस ओर इंगित करता है कि हमारा जो आज भारत की सबसे मजबूत कड़ी है नौजवान है, और नौजवान नशे की प्रवृत्ति के अंदर चूर है. सभापति महोदय, मैं तो अध्यक्ष जी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन पे आपने 3 दिन डिबेट रखी, इसी तरह नशे की प्रवृत्ति से छुटकारा कैसे मिले, ये एनडीपीएस एक्ट बनाए, इनकी धाराओं में संशोधन कैसे हो, कैसे किसानों का जो अफीम के पट्टे जिनको मिलते हैं, कैसे किसानों का भला हो, और कैसे नौजवानों को एक सही दिशा के अंदर नशा मुक्ति के अंदर किस तरह खोले जाए, इस मामले में विस्तृत चर्चा इस सदन के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि पूरा देश देखे कि केंद्र की सरकार और लोकसभा अध्यक्ष जी जो चिंतित थे पर्यावरण को लेके, हम सब कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति चाहते हैं. सदन के अंदर भी बहुत से ऐसे माननीय सांसद है जो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा तक का सफर तय किया. और दुर्भाग्य इस बात का सभापति महोदय कि किसान के बेटे जिस तरह नशे की प्रवृत्ति में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, हम सबको दुख होता है. सभापति महोदय, एक मैं उदाहरण दूंगा आपको कि किसान यदि किसी एनडीपीएस के मामले में झूठा पकड़ा जाता है तो उसकी सुनवाई बहुत मुश्किल होती है. और मुझे ताज्जुब हुआ, एक ऑनलाइन पत्रिका में पढ़ रहा था, बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख के बेटे को ड्रग्स केस में पकड़ लिया. कितना हल्ला हुआ देश भर के अंदर कि साहब इस एक्ट में बदलाव कर दो, छोटा सा अगर कम मात्रा में पकड़ा जाए तो उसमें 10 वर्ष का कारावास नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए. लेकिन गरीब अगर पकड़ा जाता है उसकी सुनवाई और पैरोकारी देश के अंदर नहीं हो रही है. सरकार का ये कहना कि निजी इस्तेमाल के लिए सीमित मात्रा में नशीले ड्रग्स के कब्जे को डीक्रिमिनलाइज करने का कदम ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के शिकार लोगों को नशे से बाहर निकालने में मदद करने का उद्देश्य किया जा रहा है. ये बात सही है कि इस एक्ट की आड़ में कई बार व्यक्तिगत मतभेद के कारण, राजनीतिक कारण से लोगों को झूठा फंसाया जाता है, लोगों का जीवन बर्बाद होता है. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहूंगा कि जब जवाब दें किस किस उत्पाद को कितनी सीमा तक रखना अपराध नहीं है, मंत्री जी अगर ये भी बता दें तो ठीक रहेगा. मंत्री जी, आज हाँ जी एक मिनट साहब, आज एमडी पहले तो चलती थी चर्च, इसमें गांजा, अफीम, डोडा पोस्ट, लेकिन एमडी का एक नया नशा आया. सभापति महोदय, आज गांव, ढाणी और गरीब तबके के अंदर भी एमडी का नशा इस कदर हावी हो गया कि
कि वो जब तक 18 साल का 20 साल का नौजवान एमडी ले नहीं ले उसे चला नहीं जाता। मैं एक दो मेरे राजस्थान के सब्जेक्ट है, उसमें 1 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सौदी महोदय, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़ सहित अन्य जिले में भीलवाड़ा के अफीम उत्पादक किसानों की प्रमुख मांगों समस्या की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि मार्फिन के नियम को हटाया जाए, क्योंकि एक विदेशी अधिनियम है और इस नियम के हटने से किसानों को बराबर आरी में पट्टे मिलेंगे। समझ में अफीम उत्पादक किसानों ने सीपीएस पद्धति को लागू नहीं रखने की मांग की है। किसानों को अनुसार पद्धति से हजारों किसानों के साथ धोखा होने की संभावना, क्योंकि इससे बड़े किसान जिनके पास जमीन अधिक है केवल उन्हें ही बुआई का ठेका दे दीजिए। मेरी मंत्री जी से मांग है कि किसानों की शंका पर सरकार का स्पष्ट रूप जवाब देते सदन रखें। वर्ष 1998 से लेकर अभी तक के वर्षों में प्राकृतिक प्रकोप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आंधी तूफान, फसल में रोग लगने, सिंचाई हेतु बिजली समय नहीं मिलना आदि सभी कारणों के चलते बीच बीच में कई वर्षों के रुके हुए पट्टे या कटे हुए पट्टे सरकार हर हाल में जारी करें। किसानों को अफीम के पट्टे कटने में किसान का कोई दोष नहीं। इस बस साहब लास्ट एक समाप्त करता हूँ। इस तरह के मामले उदयपुर जिले की बल्लभनगर विधानसभा के अंदर सामने आए थे, वहां के पट्टे भी आप बहाल करें। मेरा आग्रह एक लास्ट मेरा आग्रह कि एनडीपीएस एक्ट की 8/29 जो धारा है जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है, उदाहरण के तौर पर कोई इस एक्ट में पकड़ा जाता है तो खुद की निजी दुश्मनी से किसी का झूठा नाम ले लेता है और उसके फोन से किसी से बात हो रखी हो जिससे अगले बात करने वाले का मादक पदार्थ की तस्करी से कोई लेना देना हो, उसे भी पुलिस मुलजिम बनाती है। इस धारा की आड़ में मोटी अवैध रकम पुलिस और नारकोटिक्स वाले कमाते। इस पर सरकार को प्रावधान लाने की जरूरत है कि कोई निर्दोष नहीं फंसे। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। इस पे एक बार 193 में चर्चा होनी चाहिए ताकि देश के नौजवानों को एक नया रास्ता इस बिल के माध्यम से मिले। धन्यवाद। खुद नोटिस दीजिए। श्रीमती नवनीत राणा। The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Amendment Bill 2021, it is a very small line, one line bill, but everybody wants to talk on drugs. Because आज जो देश में हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस के छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स को रिलेटेड, हम ये बिल को सपोर्ट करते हैं कि कुछ चेंजेस लाने के लिए जो भी जहां पे एक राज्य में हुआ उसके द्वारा हमारी मंत्री जी ने ये बिल सदन में लाया है। बहुत सारे लोगों ने इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया, अपनी अपनी बातें रखी। महाराष्ट्र के लोगों ने बात की, अलग अलग देश से, यूपी से एक मेरे भाई ने अभी कुछ टिप्पणी ऐसी की कि उस पर बात करेंगे। पर जो स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें फंस जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को कड़क प्रावधान लाना पड़ेगा। किसने कहा कि बच्चों को ना फंसाया जाए, उन पे शिक्षा नहीं हो जाए, पर मेरा ये मानना है बच्चों को बचाने के लिए कड़क प्रावधान लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे देश के बच्चे जो भविष्य उन्हें हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। मेरी ये भी सरकार से विनती है कि आज महाराष्ट्र राज्य की बात करती हूं तो गली मोहल्ले में तेजी से गांजा, चरस ऐसी चीजें भी हमने सुनी नहीं है, पर हमारे महाराष्ट्र में ये तेजी से नशीली चीजें बिक रही हैं जिससे कम उम्र के बच्चे, युवा इसके सेवन कर इसके कारण हमारे समाज हर तरीके से गलत रास्ते पे जा रहा है। तो इस चीजों को भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। आज देश में, महाराष्ट्र में अभी बहुत सारे जनों ने कहा कि गुटखा हमारे महाराष्ट्र में बंदी है और हमें खुशी है कि गुटखा हमारे महाराष्ट्र में बंदी है, पर जितना गुटखा बंदी होके गुटखा बिकता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा पैमाने में हमारे महाराष्ट्र में गुटखा ये बिक्री होती है। तो जो गुटखा बनाने वाले हैं, जो 2 नंबर से बेचने वाले हैं, उस पे रोक भी लगाना बहुत जरूरी है, तब जाके गुटखा बंदी सही मामले में हम बोल सकते हैं। सर, जस्ट 1.5 मिनट लास्ट सर, अभी मेरे एक भाई ने कहा कि बॉलीवुड के द्वारा हमारे देश की पहचान हुई है। नहीं, हमारे देश की पहचान हमारे ग्रेट लीडर्स जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए, उसके वजह से हमारा देश की पहचान हमारे भारत देश की पूरे विश्व में है। हमारा देश बॉलीवुड के बिलोंग करते हैं, हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में काम कर चुके हैं, हम खुद ऐसे आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। तो हम इंडस्ट्री को एक जैसी दूसरी इंडस्ट्री जैसे बाकी देशों में फेमस है, वैसी एक बॉलीवुड एक हमारे देश का भाग है, जो जिसके माध्यम से हमारे जो हीरोज हैं, वो एक्टर्स हैं, वो बाहर फेमस होते हैं, पर हमारा देश ये बॉलीवुड से फेमस नहीं हुआ है। सर, एक लास्ट सर, you are there on the post, sir, chair, so please sir, मेरी ये भी सुझाव है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को जो बेहतर तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, उनका एक उदाहरण है हमारे मुंबई, महाराष्ट्र में। सर लास्ट वन सर, और उन्हें और उनके अधिकारी अर्ज के कार्य करने हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु सरकार को पावर और प्रोटेक्शन देना चाहिए।
अभी सर कुछ दिनों पहले 35 किलो हीरोइन ड्रग्स हमारे मुंबई के एयरपोर्ट में पकड़ा गया। ऐसी चीजों में इतनी बड़ी हिम्मत कैसी होती है कि मुंबई जैसे शहर में लाकर इतनी बड़ी संख्या में वो बेच सकते हैं? ये इतनी बड़ा सपोर्ट कहां से मिलता है? ये अच्छा है, पर इस पे, ड्रग्स पे और नशों के चीजों पे एक बार सदन में चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश इसमें हमारे युवक फंसते जा रहे हैं, तो इस पे चर्चा लानी बहुत जरूरी है। और मैडम, आपका ये बिल के लिए हम सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। डी रविकुमार। மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த சட்ட திருத்தம் தொடர்பான மசோதா மீது பேச அனுமதித்ததற்கு நன்றி. இந்த சட்டத்திலே திருத்தம் கொண்டு வரப்பட வேண்டியது அவசியம். ஆனால் திரிபுரா மாநில ஹைகோர்ட் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையிலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற இந்த திருத்தம் மட்டுமின்றி இந்த சட்டத்தினுடைய பிரிவுகள் 37 மற்றும் 67 இரண்டு பிரிவுகளிலும் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 37 பொதுவாக இந்த சட்டத்திலே கிடைக்கின்ற ஜாமீன் அதை மிக கடுமையாக மாற்றியிருக்கிறது. எளிதில் இதில் பிணை பெற முடியாத ஒரு நிலையை செக்ஷன் 37 உருவாக்கி இருக்கிறது. இதனால் இந்த சட்டம் என்பது UAPA போல ஒரு கடுமையான சட்டமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இது திருத்தப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள். அடுத்தது செக்ஷன் 67. நாம் பொதுவாக காவல்துறையினர் முன் கொடுக்கப்படுகிற வாக்குமூலங்கள் 161 CRPCயின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுகிற வாக்குமூலங்களை நீதிமன்றங்கள் ஏற்பதில்லை. ஆனால் இந்த சட்டத்தில் செக்ஷன் 67 கீழ் காவல்துறையின் முன்னால் கொடுக்கப்படுகிற வாக்குமூலங்கள் இதிலே நீதிமன்றங்களில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் இந்த சட்டத்தை தடா பொடா போன்ற மக்கள் விரோத சட்டங்கள் ஒன்றாக மாற்றியிருக்கிறது. எனவே அந்த சட்ட பிரிவும் திருத்தப்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 1961 சர்வதேச அளவில் இதற்கான ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய அரசு, இந்திய அரசு அந்த ஒப்பந்தத்திலே கையெழுத்திடவில்லை. 1985 ஆண்டிலே திரு ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருந்த நேரத்தில் தான் இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்திய அரசு கையெழுத்திட்டது. அதற்கு பிறகுதான் இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இது ஒரு அளவிலே அமெரிக்க அரசின் நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையிலே தான் இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டது என்று அன்றைக்கு இருந்த எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் குற்றம் சாட்டின. ஏனென்றால் இதிலே தடை விதிக்கப்பட்ட பல பொருட்களை நம்முடைய இந்திய மரபிலே குற்றமாக பார்த்ததில்லை. அவற்றை பயன்படுத்துவதை, சாதாரண கிராமப்புற மக்கள் பயன்படுத்துவதை குற்றமாக பார்த்ததில்லை. இன்றைக்கு எப்படி மதுபான பொருட்களை பயன்படுத்துவதிலே இருக்கிற இந்த மாதிரியான ஒரு மாரல் அப்ரோச் எப்படி இன்றைக்கு மக்களுடைய சாதாரண செயல்பாடுகளை கூட குற்றமாக மாற்றியிருக்கிறதோ அப்படித்தான் இதிலும் பல பிரிவுகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இவற்றையும் நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த சட்டம் பயன்படுத்தப்படுவதை விட துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுவது, மிஸ்யூஸ் செய்யப்படுவதுதான் அதிகம். இதற்கு தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். அங்கே கடைகளில், குறிப்பாக மாணவர்கள் படிக்கின்ற பள்ளிகளின் பக்கத்திலே, கல்லூரிகளின் பக்கத்திலே குட்கா அதிகமாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை எதிர்க்கட்சிகள், இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கின்ற மாண்புமிகு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைமையிலே எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவையில் எழுப்பினார்கள் கடந்த ஆட்சியின் போது. ஆனால் அந்த குட்கா விற்பனையின் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பதிலாக அன்றைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் குட்கா பிரச்சனையை எழுப்பியதற்காக இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மீதும் மற்ற உறுப்பினர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுத்தார்கள். எனவே இந்த மாதிரியான மிஸ்யூசஸ், துஷ்பிரயோகங்கள் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றன. அவற்றை தடுப்பதற்குமான சட்ட திருத்தம் அவசியமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அத்தகைய சட்ட திருத்தங்களோடு ஒரு மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அதை வரவேற்போம். அவை இல்லாமல் தாக்கல் செய்யப்படுகின்ற இந்த மசோதாவை நான் எதிர்க்கிறேன் என்பதை சொல்லி அமைகிறேன். நன்றி. Thank you, Sri Janardhan Mishra ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल Sri Janardhan Mishra ji. No.
Please. Both names are Janardhan? No. I have called Janardhan Mishra from BJP. Please. धन्यवाद अध्यक्ष जी, सभापति महोदय। मैं यहाँ द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के संशोधन के संबंध में यहाँ खड़ा हूँ। इसके संबंध में जो सबसे विरोध में बात कही गई कि ये भूतलक्षी प्रभाव इस पर पड़ेगा, परंतु जो इसमें पहले से ही इस एक्ट में प्रावधान है और उस प्रावधान के आधार पर गोवा की बेंच ने भी ये निष्कर्ष निकाला कि जो एक्ट है उसकी एक्ट मंशा, इसमें सजा या कि जो भी प्रावधान है वो सारे स्पष्ट हैं। केवल एक टुटकी लिप की वजह से एक खा की बजाय का की बजाय खा हो गया, इसलिए खा इसमें संशोधित किया जा रहा है। One second, Mr. Ji. Now there are 6 more speakers, and the minister has to reply, and the bill has to be passed, and then 0 over. If the House agrees, we will extend the House up to 8 o'clock. Agreed. Thank you. Yes, please. इस आधार पर सभापति महोदय, न तो मानवाधिकारों का कहीं हनन हो रहा है और न ही किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ये जिस तरह का नियम है उसी आधार पर इसको तमाम सारी, और अभी भी निर्णय हो रहे हैं, प्रक्रिया न्यायालयों में चालू है और जजमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से इस संशोधन की वजह से जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होने से बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से ये कोई इसमें किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है। जहां तक विस्तृत चर्चा का सवाल है, एनसीबी पर तमाम प्रश्न किए गए, किसी फिल्म वाले को पकड़ लिया गया, किसी के लड़के को पकड़ लिया गया, लेकिन साहब उन गरीबों की ओर कौन देखता है? और केवल एनसीबी ही नहीं, लोकल पुलिस क्या करती है गरीब के घर में जाकर के, उसको कोई नहीं देखता। एक राजनीतिक नेता को भी पकड़ लेते हैं तो उसके खिलाफ भी ट्रायल चलता है। तो अगर फिल्म वालों के खिलाफ 1 महीने 15 दिन 10 दिन ट्रायल चल गया और टीवी मीडिया ट्रायल हुआ तो उसमें कोई बहुत बड़ा आसमान, ऐसा लग रहा है कि पूरा भूकंप आ गया पूरे देश में। लेकिन गरीब के ऊपर यही पुलिस, स्थानीय पुलिस छोटे छोटे मामलों में एनडीए पीएस में जब फंसाती है, उसका दुरुपयोग भी करती है, तो कोई नहीं बोलता। तो आज मैं समझता हूं कि केवल एनसीबी या फिल्म वालों के ऊपर जिस तरह से बातें की गई हैं, उसी आवाज में, उसी बुलंदगी के साथ जिस तरह से गरीबों के साथ कहीं कहीं लोकल पुलिस, चाहे वो बंगाल की पुलिस हो, चाहे वो पंजाब में हो, जहां जहां इस तरह से बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में तमाम सारे विरोधी दल के जो सत्ता पक्ष से इतर लोग हैं, उनको सारे लोगों को फंसा करके और जेल में बंद किया जा रहा है। इस पर कोई नहीं बोलता। मैं समझता हूं कि इस पर भी बात होनी चाहिए कि फिल्म वाले के लड़के जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, उसी तरह से गरीब के लड़के के खिलाफ भी अन्याय हो रहा है, उसी बुलंदगी के साथ बोला जाना चाहिए। और जहां तक इसमें भारत सरकार ने जो प्रयास किया है वो तो सराहनीय है और वास्तव में गजब का काम हो रहा है। लेकिन जो मुख्य रूप से जिस वजह से मैंने अपना नाम दिया था, पार्टी से निवेदन किया था कि मुझको बोलने का अवसर दिया जाए, उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि सभापति महोदय, आज कानून आप जो कुछ भी बना लीजिए, लेकिन पिता माता अपने बच्चे के साथ बैठता है क्या 1 मिनट के लिए? अगर माता पिता बैठे और वो पूछे कि बेटा कहाँ थे आज, क्या कर रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके होंठों के निशान क्या है, आंख के निशान क्या है, तो समझ जाएगा कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। आज केवल ये गांजा और भांग का नहीं हो रहा है, ये हमारे यहाँ तो ये खांसी की दवा ओवरडोज ले रहे हैं, सलूशन रबड़ में जोड़ने वाले को सूंघते हैं बच्चे, थ्रिलर रूमाल में लगा करके सूंघ रहे हैं, ले रहे हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो कहां कहां किसको रोकेंगे आप? कितने कानून बनाएंगे? कानून के साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल है माँ और पिता
बच्चे के साथ बैठे, उसको देखे। और मैंने तो अपने एक दोस्त से कहा कि तुम हर महीने तीसरे महीने बच्चे का टेस्ट कराओ, इसका ब्लड टेस्ट कराओ कि इसको ड्रग लेता है कि नहीं लेता। तो इस तरह के भी प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये जो बच्चे आज फंस रहे हैं, चाहे वो पंजाब के बच्चों को हंस लीजिए, लेकिन मेरे गांव के भी गरीबों को आप कौन देख रहा है। तो पूरे समाज को, माँ को, पिता को, भाई को, सबको एक साथ बैठ करके बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर की समस्या का समाधान होगा। मैं इस प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री थॉमस चारिकाडन। Thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the NDPS Amendment Bill 2021. The bill was introduced to amend the NDPS Act 1985 to correct a drafting error. The Act regulates certain operations such as manufacture, transport and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances. The bill amends the section on penalty. Sir, Article 13(2) of the Constitution provides that any law enacted in violation of fundamental rights enshrined in the Constitution are unconstitutional. As per Article 20, which is a fundamental right, there cannot be retrospective operation of a penal provision. Here the bill provides for retrospective operation of a penal provision. The government is trying to pass a law which will not be able to pass the judicial scrutiny. I want to highlight certain aspects relating to drug menace in our country. During the last 3 decades, the Ministry of Social Justice and Empowerment has conducted 2 nationwide drug surveys published in 2004 and 2019. The results of these surveys suggest that drug use in India continues to grow unabated. More disturbingly, heroin has replaced the natural opioids, opium and poppy husk, as most commonly used opioids. A large-scale epidemiological study from Punjab also concurred this finding. The uses of other synthetic drugs and cocaine have also increased significantly. The National Mental Health Survey 2015-16 showed a treatment gap of more than 70% for drug use disorders. The recent nationwide survey on substance use disorders has replicated the result with a nearly 75% treatment gap for drug use disorders. Added to that misery, merely 5% of the people with illicit drug use disorders received inpatient care. This large treatment gap indicates a poor accessibility, utilization and quality of health care. To meet this unabated need, the government should expand the treatment and rehabilitation facilities for substance use disorders. As drug demand reduction falls under the direct purview of both the Ministries of Health as well as Social Justice and Justice, a coordinated and concerted effort is required to fill the treatment gap with a minimum standard of care. Sir, current and future challenges in the supply of reduction lie in the earlier detection and scheduling of new psychoactive substances. The recently published report of International Narcotic Control Board revealed India's threat to methadone and the captagon, misuse of over-the-counter medications, with the definite or with the possible addictive potential is other concern voiced by the International Forum. The biggest challenge remains to maintain a rehabilitative approach than to punitive one, even while punishing the addicts. It has to be well maintained that they are treated and not simply punished. Moreover, there needs to be standardization of the rehabilitation centers across the country. They not only have to be well equipped, but also well staffed, given the nature of addicts. The rehabilitation centers shouldn't have overburdened counselors and thus maintain a healthy ratio between addicts and their counselors. Sir,
to simply maintain a punitive approach would not help to eradicate the problem from the root. With these words, I object to this bill, sir. Thank you very much, Sri Jayant Kumar Roy from BJP. Thank you, sir. I rise to support the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021. Sir, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 was enacted to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to narcotic drugs and psychotropic substances, to provide for the forfeiture of property derived from or used in illicit trafficking in narcotic drugs. The NDPS Act was amended in 1998, 2001 and 2014. The Act regulates certain operations like manufacture, transport and consumption related to narcotic drugs and psychotropic substances, financing of certain illicit activities such as cultivating cannabis, manufacturing of narcotic drugs or harboring persons engaged in them as an offence under the Act, and persons found guilty of this offence will be punished with rigorous imprisonment of at least 10 years, which may be extended up to 20 years with a fine of rupees 1 lakh. Sir, prior to the amendment of 2014 in the NDPS Act, Clause 8A of Section 2 of the said Act contains subclauses 1 to 5, wherein the term illicit traffic had been defined. This clause was relettered as Clause 8B by the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Act 2014 as a new Clause 8A in the Section 2 defining essential narcotic drugs was inserted. However, inadvertently, consequential changes was not carried out in Section 27A of the said Act. Hence, with a view to have correct interpretation and implementation of the NDPS Act, it was decided by the government to rectify the anomaly in Section 27A of the Act by substituting Clause 8B in place of Clause 8A in Section 27A. Speaker, sir. Sir, as Parliament was in session and urgent legislation was required to be made, the President promulgated the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance 2021, Order number 8 of 2021 on the 30th September 2021 for rectifying the said anomaly by substituting in Section 27A of the NDPS Act the reference of Clause 8B of Section 2 or for Clause 8A of Section 2. Sir, the amendment does not create any offence, but contains a legislative declaration that reference of Clause 8A always meant the corresponding renumbered provision in Clause 8B. Yes. And the amendment seeks to rectify this anomaly by making changes in Section 27A of the said Act in order to carry out the legislative intent of the statute, which has always been to read Clause 8B in Section 27A and already stood therein. Sir, as per report titled as Crime in India 2020 and published by the National Crime Record Bureau, total 59,806 incidents were reported in the country under the NDPS Act during the year 2020. West Bengal has only 1,626 cases during the period. The numbers, I believe, are underreported. So the state Yes, police, now conclude. Sir, please, sir. The state police has its own rule book insofar as maintaining law and order is concerned. When an elected member, myself, sir, when an elected member of parliament is assaulted and the culprit is roaming
freely, we can think the partisan manner in which the state police is functioning. Sir, here I would like to draw your kind attention of the government towards the misuse of NDPS Act by the government of West Bengal, where large number of political workers are arrested or detained under the various provisions of the NDPS Act. Thank you. It has become an instrument of the state oppression against the party workers. Yes. With this, sir, I would like to I would like to request that there should be some kind of monitoring so that states enforcement agencies may not misuse this NDPS Act for political gain. Thank you, sir. आदरणीय महोदय, मैं सदन में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है। इस संबंध में चिंता के कुछ बिंदुओं को उजागर करना चाहूंगा। इस ऑर्डिनेंस को लेकर ऐसी क्या जरूरत थी, ये बात समझ के बाहर है। संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति जी केवल ऐसे मामलों में ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे सकते हैं जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, लेकिन यह विधेयक तत्काल या तात्कालिकता की शर्त को पूरा नहीं करता। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है और संसद की शक्तियों को नजरअंदाज करता है। महोदय, मौजूदा विधेयक का एक खास मकसद 2014 के संशोधन के दौरान ड्राफ्ट तैयार करने में हुई गलती को सुधारना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2014 में ड्राफ्ट तैयार करने के दौरान सरकार ने खंड संख्या में साधारण परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। विधायी मामलों में ऐसी लापरवाही नहीं होती है। अगर उचित निगरानी के बिना विधेयक को ड्राफ्ट तैयार होता तो यह साफ तौर पर सरकार की गंभीरता में कमी माना जा सकता है। ऐसा होने पर भविष्य में कानूनी जटिलताएं पैदा होती है। महोदय, एनडीपीएस एक्ट में कुछ प्रावधानों में सुधार करने और उसे फिर से तैयार करने की भी तत्काल जरूरत है। नशीली दवाओं का उपयोग एक सामाजिक समस्या है और इसकी उपलब्धता सरकार की विफलता का कारण है। इस नाते इसके उपयोग करने वाले के प्रति जरूरत से अधिक कड़ाई ठीक नहीं है और कानून को वह थोड़ा उदार होना चाहिए। मौजूदा अधिनियम और हमारा समाज नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों को समस्या के रूप में देखते रहता है और उन्हें दंडित किया जाता है, जबकि सही नजरिया यह होगा कि उनकी उचित देखभाल, परामर्श और पुनर्वास हो। सजा तो ड्रग्स सप्लायर और गिराहों को मिलनी चाहिए कि ड्रग्स यूजर्स को, ना कि ड्रग्स यूजर्स को। ड्रग्स कभी कभार उपयोग करने वालों को वर्तमान में एक्ट के प्रावधान में नशेड़ी के रूप में माना जाता है। इसे फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। मुंबई में एक मामले में हम सब ने हाल ही में देखा है। ऐसे मामले को सुधारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। अभी ऐसा लगता है कि जैसे नशेड़ी और नशे के कारोबारियों को एक ही तराजू में तोला जा रहा है। महोदय, कई अध्ययनों से पता चलता है कि नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के प्रति उदार नजरिया और उनका पुनर्वास उनको इस दलदल से निकालने के सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बिंदुओं पर गौर करेगी और एनडीपीएस एक्ट को इसके प्रति उदार रहते हुए इसे फिर से तैयार करेगी और जरूर सुधार करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री तोल तिरुमवलवन जी। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த மசோதாவை எதிர்க்கிறேன். போதைப்பொருள் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. இளம் தலைமுறையினர் பாழாகும் நிலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒருபுறம் மது பழக்கத்தால் இளைஞர்கள், ஏன் இளம் பெண்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். கிராமப்புறங்களிலும் இப்போது அது பரவி வருகிறது. மது பழக்கத்தால் பாதிக்கப்படுகிற இந்த சமூகம் ஹெராயின் போன்ற போதைப் பொருட்களாலும் பாதிக்கப்படும் அவலம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் எவ்வளவு கடுமையான சட்டங்களை போட்டாலும் கூட அந்த சட்டங்களால் இந்த மாஃபியா கும்பலின் நடவடிக்கைகளை, போதைப் பொருளை கடத்தி வியாபாரம் செய்யக்கூடிய
இளம் தலைமுறையை பாழாக்கி கொண்டிருக்கிற மாஃபியா கும்பலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலை இல்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறது. அரசு இதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அடுத்த தலைமுறையினரை, இளம் தலைமுறையினரை பாதுகாப்பதற்கு பொறுப்புணர்வோடு செயல்பட வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளை நான் முதலில் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அண்மையில் குஜராத் முந்த்ரா போர்ட் அதானி துறைமுகத்தில் 3000 கிலோ ஹெராயின் கைப்பற்றப்பட்டதை நாடு அறியும். அது ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக ஊடகங்களில் நாம் அறிந்தோம். யார் கடத்தினார்கள், எதற்காக இங்கே அது இறக்குமதி செய்யப்பட்டது, அதற்கு பொறுப்பானவர்கள் யார்? கைது செய்யப்பட்ட 2 பேர் மிக சாதாரணமான ஒரு நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று தெரிய வருகிறது. இவ்வளவு பெரிய ஒரு போதைப் பொருள் கடத்தல் தொழிலில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் யார், அந்த பின்னணி என்ன என்பதை அரசு அறிவிக்க வேண்டும், நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். அதானியின் பெயரால் உள்ள ஒரு துறைமுகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேசவிரோத செயல் நடந்திருக்கிறது. ஆப்கானிஸ்தான் என்பது தாலிபான்களின் கைகளில் உள்ள ஒரு நாடு. அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு எப்படி இவ்வளவு பெரிய அளவில் 3 டன் அளவிலான ஹெராயின் வந்து இறங்கியது, அது எங்கே போனது? இது தொடர்பாக ஏன் அரசு இதுவரையில் எந்த நீதி விசாரணைக்கும் ஆணையிடவில்லை? எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் இது குறித்து குரல் எழுப்பியும் கூட அரசு மௌனம் காப்பது ஏன் என்கிற கவலை மிகுகிறது. ஜூன் மாதத்தில், இது செப்டம்பர் மாதத்தில் நடந்தது என்றால் ஜூன் மாதத்தில் 25,000 கிலோ ஹெராயின் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து இறங்கி இருக்கிறது. அது எங்கே போனது? இப்படி போதைப் பொருட்களால் இந்த தேசம் பாழாகி கொண்டிருக்கிறது. இளம் தலைமுறையினர் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வாழ வேண்டிய இளம் பருவத்தினரின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி கொண்டிருக்கிறது. பள்ளிகளிலும் கல்லூரி வளாகங்களிலும் நகர்ப்புறங்களில், குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், ஏழை எளிய மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில், மீனவர்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் வெளிப்படையாக போதைப் பொருட்கள் வியாபாரமாகின்றன. ஆகவே இவற்றையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த அதானி துறைமுகத்தில் கடத்தப்பட்ட அல்லது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஹெராயின் தொடர்பான குற்றப்புலனாய்வு விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும். உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதி தலைமையிலான ஒரு விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும். தனியார்மயப்படுத்துதல் என்பது எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட தேசவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு தனியார் துறைமுகங்கள் பயன்படுகின்றன என்பதை சுட்டிக்காட்டி அரசு இதிலே கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். मंत्री वणक्कम श्री मनोज रजूरिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी कि आपने मुझे एनडीपीएस एक्ट बिल अमेंडमेंट बिल 2021 पर बोलने का अवसर दिया। 1985 में जब ये बिल एक्ट था, उससे लेके अब तक अनेकों संशोधन अनेकों बार हुए हैं, लेकिन 1 मई 2014 में जब इसका संशोधन किया गया तो इसमें एक टेक्निकल त्रुटि रह गई। जो संशोधन 27(a) में था, वो उसकी धारा 8(1) में जो संशोधन हुआ, वो 27 में जो होता 8(b) लिखा गया था, उसको वापस 8(a) में नहीं किया गया था। एक तकनीकी, एक क्लेरिकल मिस्टेक को सही करने के लिए बिल लाया गया है। बहुत छोटा बिल है, लेकिन इस छोटे बिल के माध्यम से जहां ड्रग्स और नारकोटिक्स की बात होती है, एक बहुत बड़ा विषय इस देश का हम सबके सामने आता है। मैं एक छोटी सी जानकारी जो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस सदन के सामने, इस देश के सामने रखना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आज भी लगभग 2,90,18,000 लोग भांग का सेवन करते हैं, जो कि एक बहुत चिंता का विषय। इसी प्रकार से लगभग 1,86,44,000 लोग अफीम का सेवन करते हैं। लगभग 1,05,80,000 लोग नींद के लिए ड्रग्स लेते हैं। लगभग 51,25,000 लोग सूंघने की भी दवाइयों के माध्यम से नशा करते हैं। कोकीन का भी नशा लगभग 9,40,000 से भी अधिक लोग करते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये तो एक छोटी सी सूची है और सही आंकड़े देखेंगे तो इनकी संख्या कई गुना हो सकती है। आज देश के बड़े शहरों में नहीं, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक बड़े शहर और गांव-गांव तक ये नशे की जो कारोबार है, ये पहुंच चुका है। आज स्कूलों के अंदर छात्रों को लेकर, कॉलेजों में, अस्पतालों में बेरोजगारों को निशाना बनाया जाता है। मुफ्त में ये शुरू में बांटकर उनको बाद में मजबूर किया जाता है कि वो नशे की दवाइयां खरीदें।
और ऐसी लत पड़ती है कि अनेकों अपराध करने के लिए भी निर्दोष जो बालक है, युवा है, वो मजबूर हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, इस प्रावधान के लिए बाद में इस ऐसी अनेकों बड़े आंकड़ों के बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को एक नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से एक बड़ी मुहिम छोड़ी इस देश के युवाओं को नशे से मुक्त कराने की। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी कि इन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए, इस देश को नशे से मुक्त करने के लिए पिछले वर्षों में 585 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट नशा मुक्त अभियान के लिए इन्होंने दिया। और उसका परिणाम रहा कि इस देश के अंदर 1,40,00,000 से अधिक लोग इस मुहिम के माध्यम से इस नशे की लत से मुक्त पा चुके हैं। ऐसा ही नहीं, आने वाले समय में इस नशे की लत को छुड़ाने के लिए देश के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, कार्यकर्ताओं को पैदा करने के लिए भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8,000 कार्यकर्ता ऐसे तैयार किए जा चुके हैं। उन 8,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है कि वो नशे के अगर कोई आदी व्यक्ति हो, कोई युवा हो, उसको कैसे बचाएं, और अगर उसको नशा लग गया हो तो उसको छुड़ाने के लिए उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में कैसे उसका इलाज किया जाए। उसके साथ में 4,000 से अधिक युवा मंडलों को इसके साथ में जोड़ा गया है। माननीय सभापति महोदय, इस नशे की लत से सबसे अधिक किसी को नुकसान होता हो तो महिलाओं को होता है, और महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उनका कैसे योगदान हो सकता है, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 29 लाख महिलाओं को इसके साथ में जोड़ा गया है। और यही नहीं, आज देश के प्रत्येक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और जिला प्रशासन के माध्यम से भी माननीय सभापति महोदय ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है जिससे युवाओं में इस नशे को रोका जा सके। इस एक्ट के अंदर नशे के कारोबार करने वालों को सजा का प्रावधान किया गया, उनकी संपत्ति जब्त करने का उनको 10 साल से 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, आज सदन के माध्यम से हम सबको इस चीज की आवश्यकता है कि इस देश में नशे के इस व्यापार को समाप्त करने के लिए, हमारे देश की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए आज देश को एक संयुक्त रूप से संकल्प लेना होगा। हमारे परिवारों को जोड़कर समाज को एकजुट होना होगा और इस नशे से की जड़ों को इस देश से उखाड़ कर फेंकना होगा। आपने इस अवसर पर मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री फसलुर रहमान। सभापति जी धन्यवाद। सभापति जी धन्यवाद। आज का ये बिल जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के नाम से जाना जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि समाज के नौजवान, खासतौर से स्टूडेंट और कम उम्र के बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने का अभियान चलाए। चूँकि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि मेरी लोकसभा और ज़िला सहारनपुर, जो कि यमुना नदी के किनारे और हरियाणा के बॉर्डर पर आबाद है, इसके दोनों तरफ गांव और देहात के अंदर इस ड्रग का इस्तेमाल आम हो रहा है। तो मेरा कहना है आपसे कि ख़ास तौर से हमारे ज़िला सहारनपुर, शामली, कैराना और इसके साथ साथ दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा के कुछ शहर जो इस बॉर्डर से यमुना किनारे पर बसे हुए हैं, वहाँ पर माफिया के लोगों ने अड्डे बनाए हुए हैं और बहुत तादाद में वहाँ पर से सप्लाई जारी होती है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से हमारे जो आसपास के बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, पार्क हैं, उन जगहों पर भी माफिया लोगों ने अड्डे अपने बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलजुल कर इस ड्रग्स और आपके इस सब्सटेंस के खिलाफ अभियान चलाए और इसके अलावा जो और दूसरे नशे हैं उनके खिलाफ भी अभियान चला जाए ताकि हमारी नई नस्ल बच सके। मैं एक और अनुरोध करूंगा कि ये सिर्फ उसी शक्ल में इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए इस्तेमाल करने की जब डॉक्टर्स या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करें कि ये किसी के लिए ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि अगर क्वांटिटी रखने की इजाजत दी गई तो इसके भयंकर परिणाम आएंगे और शायद हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। The last speaker, Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Almost all the points are covered. Yes. I shall be very brief. I know the paucity of the time. See, while dwelling on the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021, I would like to highlight the fact that the Act has evolved over the years and has been amended thrice in the year 1988, 2001 and 2014, which has entirely changed the scope and direction of the legislation. However, I am little tempted to echo the impression and perception expressed by some of our esteemed colleagues by saying briefly that the text of the provision says that offences mentioned under section 2, 8A subclause 1 to 5 are punishable through section 27A. However, section 2, 8A subclause 1 to 5, which is supposed to be the catalogue of offences, does not exist after the 2014 amendment. So, if section 27A penalizes a blank list or a non-existent provision, it can be argued that it is virtually inoperable, number one. Number two, the new provision is giving retrospective effect from 1st May 2014. That means a criminal provision is given which will not hold in good law. It also violates the fundamental rights in Article 20 because a person can be punished for an offence for which there is a law in existence at the time of commission of the offence. Sir, some of the issues I think which need to be addressed or to be spelled out, because in this bill there is no differentiation between users and traffickers. We do not know whether the government is going to decriminalize personal consumption also. What is the difference between soft drug and hard drug? How do you define consumption? These are the various issues that need to be addressed also. Despite the existence of NDPS Act 1985, nearly 3.1 crore people in India are estimated to be cannabis users. There is a need for the expansion of categories for drugs or chemicals in the scheduled list. A number of chemicals should be scrutinized again and should be listed as a trafficker substances in the list of controlled substances. There is a menace hovering across the country insofar as drug is concerned, because there is a toxic nexus between narcotics and terrorism. That is why it is called most of the time that we have been affected by narco-terrorism. See, in this bill also, I would like to highlight that instead of providing institutional counseling and adequate support which can provide substantial support to the dependents and help eradicate the menace of drugs and other psychotropic substances, the government continues to penalize people. The government should factor in that unemployment, poverty, peer pressure, unaddressed mental health issues are the reasons that steer most people into the consumption of illicit drugs and substances, and penalization will not help to address and resolve this. Madam, I would like to draw your attention, because you are happen to be in charge of this bill, that the law does not define consumption, I have already stated, nor does it prescribe any procedure for determining what constitutes consumption. At what stage can the crime be considered to have been committed? Is it after the act of consumption? Is it the ongoing process of consumption? Does having consumed a narcotic
or psychotropic substance at any point in your life, however many years ago, make you vulnerable to criminal sanctions for the rest of your life. The involvement of various authorities, I think the multiplicities of authorities will certainly compound the act, which has already been complicated by its own definition and narration, such as the involvement of various authorities has led to the functions overlapping and an unnecessary burden on the implementation of the NDPS Act. A critical overview reveals that the control of illicit drug trafficking and international organizations coordinating comes under the duty of the Ministry of Finance, number one. Department of Revenues in the Ministry of Finance, you are looking after, looks after the execution of the provisions of the Act and monitors the legal production of opium. While the Ministry of Social Justice and Empowerment is responsible for the rehabilitation of addicts, the demand reduction and aftercare are under the control of the Ministry of Health and Family Welfare. And finally, both the NCP and the Directorate of Revenue Intelligence provide intelligence. This has oftentimes led to questioning the reason behind such divisions and their overall contribution to the administration of the criminal justice system. It rather seems that these agencies work more efficiently if there had been a clear demarcation of their function. To that end, even the NCB has demanded a reduction in their mandate. Yes. The issues emerge from the very first stage only of their functioning, which is a data collection. Since the statistics and trends are collected by police, NCB, and the border security forces, it creates a difficulty in understanding. Even certain other agencies are authorized to make arrests, such as the customs authorities and the DRI. All of these do not allow having an accurate central repository, which in turn fails to provide a certain specific aggregate count to make a precise assessment of the numbers. This has led to the criticism of the National Crime Record Bureau and NCB statistics. Since the severity of the NDPS Act requires great deliberation, NCB would only be effective in smoothly fulfilling its obligation if the changes are made in the institutional and implementation levels. Madam, geographically, we have been situated in the crossroad of Southeast Asia and Southeast Asia, which is also recognized as a golden triangle and golden crescent. India lies in the close proximity of this area. This makes India vulnerable to transit, trafficking, and consumption of opium derivatives in various forms along the known trafficking routes. Sir, I know that there is a time constant. I do not want to burden you more. I only flag the attention of the House that in India, more than $35 billion to $400 billion of illegal trade, illegal drug trafficking have been continuing on. And the caravan has been going on in spite of all kind of prohibition, acts, etc., etc. I do not know how you will be able to resist this drug trafficking, because here lies the profit matrix and the ballooning effect. Therefore, drug trafficking has been growing by leaps and bounds, and it has further been aggravated in the emergence of Taliban-led Afghanistan. You are well aware of it. सर हो गया सर, मैं लास्ट में एक बात करते हैं. हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, खासकर हमारा स्टेट बंगाल, जहां एनडीपीएस केस में एक डर पैदा होते हैं. डर पैदा होने की वजह यह है कि वहां विपक्ष पार्टी के लोगों को धड़ल्ले से एनडीपीएस केस में फंसाकर हिरासत में भेजा जाता. एनडीपीएस केस में फंसाकर हमारे पार्टी को सैकड़ों कार्यकर्ता को, बेगुनाह लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रख दिया गया और सालों साल वो सड़ रहे हैं जेल के पीछे.
इससे हम बचेंगे कैसे? आप एनडीपीएस केस तो लाते, एक्ट तो लाते हैं, लेकिन इस बेगुनाहों को जो सालों साल सड़ रहे हैं जेल के अंदर सलाखों के पीछे, इन लोगों को बचाने के लिए कुछ तो तरीका निकालिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक डर पैदा किया जाता है कि इस बात पे जानते हैं, कहते हैं कि सत्ता पक्ष पार्टी के साथ तुम ज्यादा तानातानी मत करो, अगर हो सके तो रूलिंग पार्टी से जॉइन करो, अगर ना करोगे तो पानी केस में फंसा जाएगा। तो ये पानी केस हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल के आम लोगों को अंदर एक खौफ पैदा करते हैं। ये पानी केस से मुक्त कराने के लिए कोई ठोस इंतजाम किया जाए, इस कहते मैं आपकी बात को विराम देता हूं। नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय, सब सलाह दे रहे थे आप। हाँ, कि कौन सी पार्टी है बता दो नाम। तो नहीं है, नाम लेने में डर है। नाम से डर देखो। और यहाँ तो मोदी जी का नाम ले रहे थे। वो इन्हीं का डीएनए से है जी। माननीय मंत्री जी को बुलाया। सम्माननीय स्पीकर सर, about 4 hours of good debate. In fact, very good debate. बहुत सारे विषय के ऊपर चर्चा हुई, मगर पूरे डिपार्टमेंट की कर लिया। आप ये बताओ। हाँ, बिल की तो कम, सिर्फ एक दुख से मैं कह रही हूं, मगर दुख इतनी विषय के लिए नहीं है, मगर ये बोलना आवश्यक है। इस बिल आज जो हम अमेंडमेंट के लिए ले आ रहे हैं उसके दायरा कम है, मगर चर्चा हुआ इतना बड़ा, जिससे सबको विषय समझ में आ रहे और हमें भी इस विषय का गहराई हमारे माननीय सभी सदस्यों गण के भाषण से व्यक्त हो रही है। मगर आज का बिल का विषय इतना बड़ा नहीं, ये बहुत विनम्रता से हम आपके सामने में रखना चाह रही हूं। मैंने सोचा ये रिप्लेसमेंट बिल है, ऑर्डिनेंस को हटा रहे हैं और बिल को लेजिस्लेटिव अप्रूवल के साथ ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल और ऑर्डिनेंस में भी कोर्ट के द्वारा जो हाईलाइट हुआ है, एक जो एरर, उसको करेक्ट करने के लिए जो आदेश कोर्ट से आया है उसको पालन करते हुए, क्योंकि तब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, ऑर्डिनेंस ले आए और जब सेशन शुरू हो गया है उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस हम कर रहे हैं। सो इट इज एसेंशियली रिस्पॉन्डिंग टू द कोर्ट विच राइटली पॉइंटेड आउट एन एरर, टू करेक्ट दैट एरर, एंड बिकॉज session was not on, we had to do it through an ordinance, and after that the first available session we are bringing it as a bill to replace the ordinance. But in this bill the matter is very limited. बहुत सारे हमारे एमपी गण इस विषय के ऊपर बोल दिया कि क्या था वो एरर, उसको करेक्ट क्यों करना आवश्यक समझा और कोर्ट ने आदेश दिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाह रही हूं। मगर एक विषय, उस संबंधित विषय में बोलना चाह रही हूं। ये अमेंडमेंट का एरर में 1 मई से जो ऑर्डर, 1 मई 2014 से जो ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन में आया, नोटिफिकेशन उसका 1 मई 2014 में हुआ, जो कानून 2011 में पेश हुआ, 2014 में पास हुआ और 2014 1 मई को उसका नोटिफिकेशन हो रही है। उसमें एक एरर, त्रुटि बोलते हैं, त्रुटि था। सो उस त्रुटि को करेक्ट करने के लिए हम इतने दिन क्यों वेट किया, ये भी प्रश्न बहुत सारे माननीय सदस्यगण ने उठाए। मगर मामला कोर्ट में चले गए और बहुत सारे कोर्ट में हियरिंग्स भी हो रहा था, और जब 2017 में कई सदस्य कोर्ट केसेस का डेट्स में भी
कुछ इधर उधर डेट्स इतना सही नहीं बताया, मैं उसको भी सही करेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही हूं। वो मुंबई हाई कोर्ट जो गोवा बेंच का डिसीजन था वो हुआ अप्रैल 2017 में। ये 1 मई 2014 में जो गलती हुआ उसका कोर्ट में चर्चा गोष्ठी होने के बाद, ट्रायल होने के बाद, उसका गोवा कोर्ट बेंच ने मुंबई हाई कोर्ट का अप्रैल 2017 में उनका आदेश उस समय आया। मगर त्रिपुरा कोर्ट का आदेश जून 2021 में हुआ। इस साल जून में त्रिपुरा कोर्ट से ऑर्डर आया कि इसको आप ऐसे छोड़ना नहीं है, स्पिरिट ऑफ द एक्ट हम सब समझ रहे, मगर आप करेक्ट करना ही होगा। और वो बात कहने के समय त्रिपुरा के कोर्ट के द्वारा ये भी विषय स्पष्ट किया गया है कि जल्द से जल्द अमेंड करो, और अमेंड करने के बाद आई एम रीडिंग दिस आउट, द कोर्ट asserted that both the central government and the state government shall publish a notification bringing about the content of this order, court order, in short for the public notice, so that the requirement of Article 20, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सांसदगण, माननीय स्पीकर जी, उस कंसर्न को, सही कंसर्न को व्यक्त किए कि क्या ये अमेंडमेंट करने की वजह से आर्टिकल 20 में जो हक दिया गया उसका उल्लंघन तो नहीं हो रही। भर्तृहरि मेहताब जी रेस किए, माननीय मनीष तिवारी जी रेस किए, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ एमपी गण उसका विषय रेस किया। सो कोर्ट का डायरेक्शन भी इस विषय में स्पष्ट है, और इस लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के बाद उसको हम पालन करना आवश्यक है। इसीलिए मैं दोबारा उसको स्पष्ट करना चाह रही हूं। The court asserted that both the central government and the state government shall publish a notification bringing about the content of this order, in short, for the public notice, so that the requirement of Article 20 of the Constitution of India is not diminished. इस कानून के द्वारा जो अमेंडमेंट हम ले आ रहे हैं वो आर्टिकल 20 का लेटर एंड स्पिरिट में रिस्पेक्ट करता है, डिमिनिश नहीं करता। वो मैं आपके द्वारा इस हाउस में स्पष्ट रखना चाह रही हूं। और इस विषय में हमने माननीय एसजी सॉलिसिटर जनरल के द्वारा उनके सुझाव, उनके एडवाइस भी लिए, और इसमें एक विषय और स्पष्ट करना चाहिए जिससे आपका ये जो डाउट मन में रहता है वो भी हट जाएगा, मिट जाएगा, विल बी रिमूव्ड। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी एक समस्या बाकी बहुत सारे सदस्यगण के मन में थे। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, particularly because it's a criminal law, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ के ऊपर परमिशन नहीं है। सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ के ऊपर हम अभी अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स आर परमिटेड। ये माननीय एसजी का ओपिनियन है, मैं इसीलिए इस सदन में आपके द्वारा रखना चाह रही हूं। माननीय स्पीकर जी, clarificatory amendments, because they are only clarificatory and seek to remove an obvious mistake, इस mistake जो इसमें है, जो 1 मई 2014 में नोटिफाई हुआ, उस नोटिफिकेशन के द्वारा ही सबको समझ में आया वो एरर इसमें आ गए हैं। फिर कोर्ट ऑर्डर्स आया, उस एरर को एक्सप्लेन करते हुए अभी अमेंडमेंट ले आ रहे हैं। इसीलिए ये नया क्रिमिनल एस्पेक्ट को टच नहीं कर रहा, सब्सटैंटिव क्रिमिनल
लॉ को कुछ अमेंड नहीं कर रहा, नया क्रिमिनल लॉ का एस्पेक्ट ले नहीं आ रहा, इसीलिए कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट कर रहे हैं, एरर को करेक्ट कर रहे हैं। एसजी का एडवाइस भी है कि इट इज क्वाइट राइट टू डू इट, ये रिट्रोस्पेक्टिव करने में दिक्कत भी नहीं है। मगर इसमें रिट्रोस्पेक्टिव के विषय में ये भी प्रश्न पूछा गया कि अगर गलत भी नहीं है मगर क्यों करना है, आपको क्यों करना पड़ रहा रिट्रोस्पेक्टिव। I just want to explain that also as to why do you need to bring the retrospective aspect to this amendment correction. It's a clarificatory amendment, so you think it's right, you've obtained the opinion of the SG, it is fine. But then why retrospective? Substantive nahi hai, isliye retrospective allowed hai, but even then why do you want it? I agree normally criminal laws are not amended retrospectively, which I've mentioned it a minute ago. There is only one reason why this has got to be retrospective. We don't want to create, through this amendment, any new criminal liability with retrospective effect, but only seek to embed the intent of the legislature into the letter of the law. Between 2014, 1st May, when it was notified with an error unknowingly, and today when the amendment, or earlier when the ordinance was brought in with the amendment, we have corrected it. Between 1st May 2014 and the time when we have corrected it earlier with the ordinance, which was sometime in September, post the Tripura court, and now with the legislation. With this legislation, you have clearly said this amendment is brought in, the clarificatory amendment, the error is getting corrected. But what happens between 1st May 2014 and now? We don't want to have anything which is going retrospectively, bringing criminal liability and becoming a gray area in its own right, and therefore retrospective amendment. This amendment is being applied retrospectively. With this amendment, therefore, sir, the law will be in line with the intent of the legislature, which was before 1st May 2014, fine, and now it's fine, but in between there was a time when the error continued and created a lot of trouble for people. So we don't want to have criminal liability retrospectively, and therefore we have to bring this amendment, which is not a substantive amendment, but yet with a retrospective effect. A lot of discussion has happened. Quite a few larger issues have been discussed about the definition, about the treatment of licit versus illicit. Both interesting observations and right observations have come up, highlighting that it's all right now you're doing a correction which should have consequentially happened earlier when the amendment happened, but that didn't happen then, we are doing it now. But what about the larger issues? The treatment of people. Even then, also highlighting the point that when you're dealing with narcotics, highlighting the need for palliatives or palliative care where you will still need a bit of this narcotic for that purpose. How are we going to treat them? In that, whilst occupying your chair, Honorable Member Bhartrihari Mehta mentioned about posti. Adirji can correct me, posti? Post. That is poppy seed, right? In Telugu, they will call it as gasalu. In Tamil, they will call it as gasakasa. Yeah, it is kaskas, as in Hindi, which is edible. I like to bring in, that is not germane to this debate, but I'd like to say here, there is no ban on edible post or poppy seed or gasakasa, gasalu in all languages. There is definitely no ban.
In fact, I might say, for a minute wearing my commerce hat, we import poppy seeds for edible purposes. And quite a substantial quantity of it is imported because what we cultivate in this country for edible poppy is not sufficient. So we import every year. In fact, we import from countries like Turkey, Australia, and some other countries as well. So there is, I want to assure, through you, Manya Speaker, sir, I'll come to that issue. I'll come to that. You're right, but I might want to now say, because it's Adhir Ranjanji who's getting up and speaking about it, it was during UPA the restrictions were brought in. I'm struggling to get it cleared. I'm actually struggling to make sure that enough poppy is grown, because particularly those regions of Rajasthan which cultivated Barmaid and border areas, Bikaner, cannot grow any other crop otherwise. And India needs palliative medicines. You need codeines to produce cancer palliatives. And we also need poppy for edible purposes. आदिर जी अब सही उस समय भी बोलना था जब यूपीए के द्वारा restrictions आया उसके ऊपर. He was minister also. हाँ नहीं उस समय एकदम करार सख्त conditions लगाया राजस्थान ने दम घुट गए उनका. गुस्सा टीएमसी पे करना मैं कोई दिक्कत नहीं. No, very right, very right. I fully agree. सुनते थे अदिर भाई. हाँ अदिर भाई आपकी बात तब सुना नहीं गया ना, इसीलिए restriction आया. हम हटा रहे हैं आपके बात सुन करके. And also issues about punishments which are being given to different people. People like students, college students who are getting drawn into this. We need a social system through which we are able to deal with them with greater care. We don't want our young to become victims of these kind of misuse of drugs. And also the big concern, which many of the honorable members have rightly pointed out, about the harassment which law enforcing agencies or whoever is undertaking. These are, and also I quite appreciated when Adhir Ranjan Chaudhary ji brought the dimension, the multi-departmental dimension, which will have to play or have a role in this. He rightly recalled that it is Social Welfare Ministry, Family Welfare Ministry, Home Ministry, and also poppy cultivation coming under the Finance Ministry, Revenue Department, and so on. And you are right in highlighting, can there be a clear demarcation? Whilst clear demarcation can help, synergy also helps, greater bringing together, different ministries and departments. I appreciated the point of, sir, I'm also, Manya Speaker, sir, sorry, I'm also responding to issues which are not core to this amendment. I'm getting drawn into the larger debate that honorable members have brought into this context. N.K. Premachandran ji was right in saying care should be taken while drafting. Now look at the time that we are spending to talk about one error which has cost a lot of court's time and led to a lot of grey areas, and today we are spending time to understand why that has to be done, and in the context speaking about so drafting and the legislative process about which N.K. Premachandran ji spoke. Absolutely, I'm with you, I fully agree. Every full stop, using your own line, every full stop, every comma in a legislative framing of an act matters. And that's got highlighted in this court decision. We'll have to take clear care to make sure that the drafting are fine. Sir, I'm coming to the final points of my response to the various members who spoke. I think 29 of them have spoken, participating in detail. I'm very impressed about the inputs I've received. We'll keep this in mind if and when the larger aspects will have to be looked in, and a fresh law, a comprehensive one, will be ever thought of to do it. So I just wanted to highlight the fact, again, going to the larger issue. Mehtab ji, even at the beginning, said
ordinance is the country from where we've taken this constitution. UK does not do ordinances. Why are we doing it? And if we really have to bring in the legislation, why don't we straight get into the bill format rather than look at ordinances? And the tradition of going through an ordinance has been long in this country. I fully agree that that is a matter in which we can speak a lot, and not just for NDPS law, but also for other things where ordinances have become necessary. So if I go by the larger understanding which I get from the speeches of the honorable members, this particular amendment, correcting an error, giving a clarificatory amendment, and also applying retrospectively because it's not substantive for criminal law amendment, I don't see an objection. The larger objection is about why should there be an ordinance at all? And in this case, I've explained as to why the ordinance had to come in, so I can understand the other aspects. There is just one issue on which I want to highlight because it's important for the Indian economy. And I'm sure majority of the members, because there's this translation available in the parliamentary system, couple of members speaking in Tamil went into the details of this Mundra port details. Manya Speaker, sir, I want to highlight here that the nearly 3,000 kgs of heroin which was confiscated in Mundra port. I wouldn't want to refer back again saying it is somebody else's port. It's nobody's. It's the national port. Every port is an asset for this country, whoever builds it. Mundra port is Mundra port, and I wouldn't name it after people who you choose to, honorable member, you choose to attribute it to. It is a national port. It may have been built by individuals or companies who each one of us may like or not so like. But it is a national port, and just because it's a private port, we think that we can say things. I'm a bit hesitant, because unless we have solid evidence in our hand to attribute certain things may not be right. Mundra port, 17th and 19th September were the time, September 2021 were the time when 2,988.21 kgs of heroin were caught, and that was done by the Department of Revenue Intelligence. 3 persons were later on arrested. We may call them small fire fries or whatever, unknown Indians or whatever. The names are all available through the media. But even on 6th of October, which is not even 3 full weeks, that case has been transferred via a Ministry of Home Affairs' order. The case has been transferred to the National Investigating Agency. No time was lost. Within 3 weeks, 19th September, Mundra port. 6th October, it has gone off to NIA. The case is being investigated by NIA. Now, following that, another arrest, another seizure has been made in Delhi airport, which doesn't again belong to any individual, it belongs to the nation. 16.105 kg of heroin was seized, and in that case, 2 Afghan nationals and 1 Indian national has been arrested. So, even in this case, 6th November, this case has also been transferred to the NIA, and the cases are being taken up with full seriousness, and the DRI and NIA are working together to share all the information so that we ensure this country's borders are safer. And I would want to highlight the fact that it is because of alert action taken by DRI that we were able to stop this
huge consignment from coming into the country. I would think the DRI requires the appreciation of the entire House, rather than pointing a finger saying, how could this come? It's come from Afghanistan. It could have come from anywhere. But the point to be noted here is, and DRI didn't lose 1 minute. It didn't even look the other way when it could have entered the country. It didn't. They didn't allow it. They stopped it. And the case has rightly gone to NIA. Sir, I would definitely want to...